from where I am presently coming. So I come from IIT Ropar, and the entity is named as IIT Ropar Technology and Innovation Foundation. Its nickname AWaDH hai, you can see there. AWaDH stands for Agriculture and Water Technology Development Hub. So we are working on emerging technologies such as artificial intelligence, cyber physical system, Internet of Things, and other machine learning. ये सब emerging technologies पे हम काम कर रहे हैं. हम agriculture and water के लिए ये technologies लेके आ रहे हैं. So I will tell what all schemes we have, what all initiatives that we have. Any one of you who is aspiring to start their own startup, because आज का हमारा program we are focusing on startup कैसे शुरू करना है, उसके लिए what all things you need to cater to it. So what all opportunities we have at IIT Ropar, I want to share that with you. So to start with, like I mentioned, that we are working in agriculture and water domain. And these are few of the areas that where we are working. Water assessment hogi, agriculture automation hogi, mapping what are present in the soil. So these are the domain areas where we are focusing on, specifically catering to smart and digital agriculture. These are the two prominent areas where we are working. Other than that, how our entity looks like, we are being supported by Department of Science and Technology. क्योंकि आज का हम focus है हमारा startups के ऊपर, तो startups के लिए government has plenty of schemes in which they are providing support to budding entrepreneurs to startups. अब जैसे if any one of you has interested to start their own startup, आपका TRL level 0 to 3 में आएगा. Then you can ask me कौन सी schemes है जहाँ पे हम apply कर सकते हैं, and which all schemes you can avail to start your own startup and boost the culture. उसके बाद आपका कुछ startup का काम शुरू हो गया, already आप market में हैं, and now you want to know about what are the other funding schemes that government has with different TRL levels के लिए different funding schemes होती है, which I will be discussing during the later half. But this is what we are doing. We are being supported by Department of Science and Technology. We have been exclusively working with the corporates such as Dassault hai. Dassault sabne suna hoga, Rafale jo banate hain. So we are working very closely with them. They have contributed nearly 600 CR support to us in terms of simulation software. जिसपे आपकी सारी आपकी simulation softwares होते हैं जो हम use करते हैं अपने Rafale and aeroplanes के अंदर. Similarly, we have started using them for our agriculture purposes, for water purposes, जहाँ पे हम digital twins बना रहे हैं crops के, farms के, आपका farm कैसे लगेगा, and simulation tools are being used by Dassault. And then a company Syngenta, this is a multinational company that is dealing with seeds and fertilizer. We are working very closely with them. फिर कुछ corporates हैं जो directly startups को fund करते हैं. Dr. Radhika, sorry to interrupt. I think the slides move नहीं कर रही हैं maybe. Okay, so this one is the first slide. If you can see, numbers are given in that. Okay, right, fine, sure. Yeah, thank you. So other than that, how our entity looks like, how many technologies we have developed, what should capture your interest is that how many startups we are being supporting. So the number is, if anyone can tell me, what is the number of startups that we have been supporting? 170 plus startups who have been joined with us. Some of them are as an entrepreneur, उन्होंने startup अभी register नहीं किया है, हम उनको hand hold कर रहे हैं, उनको mentor कर रहे हैं कि आप वो कैसे अपना startup बना सकते हो. कुछ है which are already have established their DPIIT registered startup, and now we are supporting them how they have to reach out to the market, how they have to reach out to various investors who can contribute to their particular startup business idea. And then we are having number of skilling programs. If you're working in deep tech startup, when I say deep tech startup is like you're utilizing the emerging technologies. Like in today's time, the buzzword is artificial intelligence, right? Everyone is being prone to AI. So any deep tech related where we are integrating artificial intelligence application with the product line in which you are working. So we are focusing on those special aspects. Other than just to tell you about numbers, when we talk about startups, the numbers become very important. What is the valuation of your business? How much of investment you have raised? I'm sure all of you must have seen Shark Tank. Usme EBITDA पूछते हैं, then they ask about what is your valuation, this much if I will invest, this much of equity I'm going to do. So this becomes a very hard word when you are into the startup
business. And I'm sure during all your sessions, you would be learning more about these terminology also. Today, I would be discussing about technology readiness level, but soon you will come to know about what are the investment terms, how the compulsive investments are made, how debentures are released. So there are a number of things, how equity is being calculated, how much of shares you will release, how the startup business will move towards an IPO. So there are a number of things that you would be learning about. So right now, this is your second or third session. Which session number is this? Fourth. So you must have got an idea what startup is, how the business is running. Wonderful. So other than that, these are few of the recognitions that we have got from various entities for the work we are doing specifically in deep tech entrepreneurial ecosystem. These are our partners because you cannot do anything completely on your own. You need partners. So we have partners across the ecosystem, from the government side, from the academia side, from the incubators and FPO side, from number of corporate partners, number of investment partners, because it becomes very important once you start your own business, you need money from various different sources in a form of a debt or in form of an equity or in a form of a grant. We are being assigned with number Ma'am, a of small question. investment partners. Ma'am, there's a small question, Dr. Radhika, if you can hear me. Yeah, please. Ma'am, like there's also a entity called TBIF in IIT Ropar. How Yes, different is yes. this with this AWaDH? So TBIF is another entity that is our own institute's technology business incubator. We are working in alignment with them. Our specific focus is on agriculture and water, and we are named as a technology and innovation hub. So part of our job is to stimulate the deep tech entrepreneurial ecosystem, focusing on cyber physical system in agriculture and water. So that is the only difference. Rest we are working in synergy with our TBIF. That is the in-house or incubator of IIT Ropar. Sure. Thank you. All right. Then moving ahead, because I mentioned investment partners become a very important pipeline for any incubator accelerator for pushing their startups forward. So we are being in connect with investment partners. Everyone has seen Shark Tanks where investment partners sit across, like they are sitting on the sofa. So similarly, we do a number of Shark Tanks where we listen to the pitches from various entrepreneurs, various startups, and then we sit with our investment partners to do the co-matching fund investment in these startups. So focusing on this slide is very important. Any one of you who is willing to work in cyber physical system, like the gentleman asked me, what is the difference between TBIF and the work that we are doing? We are specifically focusing on cyber physical system. When I say cyber physical system, any one of you have heard the term what is cyber physical system? No, cyber, you understand what is cyber, you understand what is physical. I bring both of them together, like me using phone for hearing, for doing some work, physical work I'm using by using digital technology or a cyber technology. That is an example of a cyber physical world. I'm using watch, so I'm using watch for my physical attributes, like I'm checking how much of steps I have taken. So this is another example of cyber physical system. Similarly, for agriculture, we are bringing smart agriculture technologies where you use geospatial technologies to predict what is the productivity on the ground itself. So that is an example of cyber physical system. So the range of cyber physical system where we are using Internet of Things, we are using data to do the AI modeling and then predicting what can be done. These all are examples of your cyber physical system. So we are specifically providing support in cyber physical system, and these are few of the programs. Like if you have some project in your mind and you want to start your own startup, then you know you have under startup and entrepreneur, we have a dedicated scheme called Sprint. Sprint is a scheme like you're a student or you're a researcher or you're a faculty or you are a budding entrepreneur. You have an idea. You're still figuring it out whether the startup will work out of it or not. So the initial support that we provide is the Sprint support. This support is up to 25 lakhs that give you the initial push to start your own startup. Once the startup has been set up and you further want to accelerate in terms of integrating the emerging technologies, like you want to integrate AI, like if we are working on health aspects, we want to include artificial intelligence for health context. Then we have a scheme called Samriddhi where the support is provided up to 50 lakhs.
Other than that, you're interested to know about what cyber physical system is all about, what artificial intelligence is, how you can integrate it. Then we have number of skilling programs that offer, and we take up number of internships who come, who sit with us, they learn about all these emerging technologies and implement in their projects and in their startup. So this is how the 360-degree support that we are providing. Today's topic, we are going to touch based upon what technology readiness level are. So in that, I would be explaining you from 1 to 9, what are the levels and at what level you will need what all support. So at AWaDH IIT Ropar, we are providing support across these 360 degrees. Then just to showcase what work we are doing, number of technologies that we have already developed, these are few numbers from various technology readiness levels. 1 to 3 is the technology that is being developing in the lab itself. From 4 to 6, you are actually validating it. You're actually experimenting with it on the actual environmental condition. And 7 and 9 that you are making yourself ready to hit the market. So this is a kind of number of technologies that we have developed. We're working at different TRL level. And these are the areas where we are focusing from agriculture automation to urban farming. Like nowadays, we are learning about hydroponics, aquaponics, urban farming. Like you can grow your vegetables itself in your balcony. So we are working on these technologies. And we have been also recognized by Department of Scientific and Industrial Research Organization, that's called DSIR. If you're going to start your own industry and you're going to start your own business and you're interested to be an R&D lead in that, then this is the right organization you have to reach to get various incentives, like you will get the tax rebate. So such kind of incentives are available with the government because once you will set up your own startup, DPIIT also offers similar kinds of incentives, which I'm sure you must have discussed in previous sessions. What are the benefits of DPIIT registration? Another organization is DSIR for the same purpose. Then talking about startup ecosystem, these are few of the programs that we are already running, starting with Pragati, Samriddhi, Dronagiri is a program. If you're working in geospatial technologies and utilizing them for agricultural water resource mapping, then Dronagiri is one program that we are running where we are providing support to carry out your pilot study in that. Similarly, water के लिए है, आपका wash domain के अंदर है, which talks about sanitation, hygiene. Similarly, a number of programs that we are running, and for all the programs that we have been supporting the entrepreneurial ecosystem, we have been credited by the highest office of the country, by Prime Minister himself. Working Aid, this is something that is presently open. We have opened up a challenge. In 100 days, we want to support, accelerate 100 startups. This program is presently running. If you are interested to file in the applications, most welcome. Share with your friends, share with your community. You can apply for this program and be part of our ecosystem. Other than these are few of our startups who have really made us proud. They started with almost nothing and now they are making multi-million business and they are reaching not only at the national level but at the global level. Like if I talk about Indira Water, this is one of our startups which has now crossed Indian borders. They are doing business in Singapore, they are doing business in other Asian countries, and they have raised around 35 CR of funding support from various other sources. So few success stories, how they are working in water filtration. The second one, like Arya eco-friendly, they are working on very normal technology. आपके जो water vapors होते हैं उनको rapidly condense करके he is making water. So Delhi जैसी जगह पे जहाँ पे water crunch है, Bangalore जैसी जगह जहाँ water crunch है, they are actually using air as a source of water. So this is one of our startup, very proud startup that we are working on. So few other things, like you all young students, this is specifically for you. If you want to learn about these emerging technologies, what AI is all about, what machine learning is, like it's not that if I am from microbiology field, I cannot learn about AI. I can also learn about AI. So we are providing such no math artificial intelligence training or internship opportunities where you need not to learn about the coding or doing math, but how you can integrate artificial intelligence with your own business line. We are doing number of skilling programs for that. These are few of the initiatives under our skilling programs that we are doing. We are making labs, we are doing number of training programs, and we are offering internships. Interns who join us, we pay them around 8,000 to 12,000 as an internship fee, and then they are being hired in various projects.
Then we are making labs. It's not only just limited to IIT Ropar. We are reaching out across the country. We are setting up of labs. These are number of labs, around 18 labs that we have set up across the country. Right from Ladakh to Northeast to Chennai. Last month we were in Himachal. We have set up in Solan itself. So with this, I stop at what work we are doing at IIT Ropar, what are opportunities we have. Any questions anyone has till now? Anyone interested in CPS, want to know more about AI, machine learning? Feel free to stop me in between and we can have more discussion on it. Yes, yes. That is one of the support mechanisms that we have purchased it and then we provide them that support on the rental basis. So few of it is being at the range. It's been available as a part of the incubation that they are doing with us. And if they need more, then on rental basis, we are providing that service. We also we want to take it up as a, like there are Euro-Indian standards are there. Yes. So we want to include that in Euro-Indian. Rather than taking water attendance, they don't get a total evaluation. Mostly we are taking it out from the substance. And then the heavy metal setting down. What it is causing to circulate. So if we have come up with a particular, material which can detect and tell you for next 5 years what will be the status of that. What is the status of the river? And if we want to take it to now stand, what should we do? So, under Bureau of Indian Standards, because I am also personally working with the Bureau of Indian Standards for our smart agriculture standards. So they have a dedicated committees being set up, like for agriculture, we are working on food and agriculture group, that's FAD 22. Similarly, for water, there is a specific 9 committees that has been set up. And then for all those 9 committees, various academic experts and the experts from industries are being nominated. The best is that you reach out to those experts because then they can pass on your information to the Bureau of Indian Standards, that pass on the information to ISO, because then the comparison that happens with ISO and then the implementation of that standards happen in the Indian scenario. So the best is that they have their own kind of a portal. It's very, very accessible. As an individual, you can go, you can identify which all experts are part of that particular committee. That committee that is also dealing with the subject matter that you have just shared. You just reach out to them, drop an email. They are very, very accessible. If you're not able to do that, just let me know that. I will pass on the information of various BIS people and you can directly reach out to them. Sure. So now let's start with the topic of today's session, that is the technology readiness level. Yeah, hello. Yeah. Can you hear me? Yeah, please go ahead. Yeah. So, ma'am, I'm Dr. Suniti. I'm from Terry, New Delhi. So, my question is that actually I'm also working in the wastewater treatment and we are developing some technology for wastewater treatment. So, in this case, here in India, there's a abundant amount of heavy metal ion. Even a presence of uranium has been detected in the water. So in this case, we are trying to remove the heavy metal ion as well as pathogen from wastewater. So is there any opportunity? Actually, we are developing 2 products regarding removal of heavy metal ion from wastewater as well as pathogen. So is there any opportunity where we can approach the our technology for the same purpose? There are a number of opportunities. At the beginning itself, I said the government has come up with number of programs. There are a number of programs under Ministry of Jal Shakti. You can directly see which all schemes they have opened up. Then there are a number of incubators, number of accelerators. They keep on rolling out the schemes. Like specifically for water, for waste treatment, I remember a year back, we collaborated with HDFC Bank. Okay. And they gave us the target of water assessment and water remediation, and your project falls under that particular thing. So we gave grants from 10 lakh to 20 lakh to work on those projects and start their own startup on those lines.
So there are Okay. number of schemes. I can share number of schemes with you, which you can directly approach, which are presently open. There is Nidhi scheme of DST that has number of programs. Nidhi, SSS is there, Prayas is there. These Yeah. days, you are seeing entrepreneur and resident schemes coming from NITI, from number of ministries. You just Yeah. go to DPIIT site, you list down the list of funding agencies for boosting your startup will come in that. So you can look into that. At Yeah. IIT Ropar in our entity, because we are also working specifically for startup, but we are working on bringing the digital aspect. Like if you're working on some IoT technology to monitor the water levels or remediation of the water, definitely then we are the point you can connect with. But what I understand, yours is completely on the physical process Yeah. of No, no. doing the Yeah. work. Yeah. I Yeah. actually want to know the some industrial problem. Okay, what kind of a problem exactly they are facing? Because they are using some kind of chelating resins or and all that and other stuff for removing of different types of contamination from water. So exactly, I want to identify the problem of it. So how can we do that? How can we approach the industry to identify the problems, exactly appropriate problems? So these You're are the things, asking these are to us, the, you are asking a right question at the right platform. This yeah. program is organized by Technology Enabling Center, and one of the objectives with which tech is working is to connect the academia with the industry and to identify the problems and do the matchmaking exercise. So I think so you can just approach our organizers and they will Yeah. help you in that. Other than that, you can reach out to various industrial organizations, like in northern part, like we have in Ludhiana, we have TICU, that is the association that deals with the industries and commercial undertakings. We have CII, we have TICI. If you are working specifically for water side, I'll recommend you connect with Indian Sanitation Coalition. So that is Okay. working completely on water, and they come up with the problem statements from industry, because FICI is an industrial association, and you can directly get the problem statements and directly align yourself according to the problem statements. Okay. And then Okay. there is another portal called Manthan. That's of Office of Principal Scientific Advisor. I'm not sure everyone knows about that, because that lists down the opportunities, that lists down the problem statements specifically of the industry to take it forward. So that can be a good start for you. Okay, ma'am. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you. Okay. Yeah. आपने बताया कि आईआईटी को जैसे कि अलग कंट्रीज है यूएस और चाइना उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया आईआईटी को प्रेस Yes, we are working on Agri LLM model, and we are presently in our second stage, जहाँ पे foundation models तक की बात होगी. We are collecting more and more of the data. So there are two thought process that have been fighting together. One is that जब already foundational models available है, why we are not working on the application side? और the second है, हमें क्यों dependent रहना है बाहर के models के ऊपर? Let's build our own models, जिसके लिए data is a kind of a currency. आजकल whenever we are talking about artificial intelligence, nothing can happen without data. And data curation हो गया, data collection कैसे हमारे country में होता है. So presently government has invested a lot. आपने जैसे all of you who are interested in AI, India AI mission has launched number of initiatives. And under that, there is a specific scheme to set up our own foundation model. So there are a number of entities who are working on that. There are 6 companies that have been awarded by Indian AI mission. So we have a dedicated mission that is working on artificial intelligence with the core purpose that we set up our own foundation model. We set up LLMs in our all the languages that are existing, because we are very, very diverse in the languages. And then use our own data, because at presently we are depending on the data of other countries. Like specifically if I talk about agriculture, जो यूरोप में एग्रीकल्चर होता है, यूएस में एग्रीकल्चर होता है, वो बहुत डिफरेंट है. इंडिया में एग्रीकल्चर आपके छोटे इतने इतने खेत के अंदर भी हो रहा है, जो स्मॉल फार्म होल्डिंग्स इंडिया में होती है. So our data is very, very different as compared to the data which Europe is working on, US is working on. So specifically, the need is that we build our own foundation models, we bring the applications on that, and we own that particular data, because everything up next 4-5 सालों में data is going to play everything on it. So
this is the right thing, and there are number of missions. India AI mission is one. The mission that we are also working, that is also focusing on it. Bharat Jain karke, there is another hub, like जैसा हमारे यहाँ पे hub है, that hub is completely taking care of LLMs under for various applications. Right. So now let me start with the topic for today's session, that is on the technology readiness level. Very aptly, it has been acknowledged or used in abbreviation forms called TRL level. And when we were doing our academic research also, we were also analyzing what is the TRL level. So today we are going to discuss about the technology readiness level. So as the name itself says, how ready your technology is. That level or maturity of your technology is being termed in form of a TRL. So TRL 1 अगर बोले 2 अगर बोले तो this is the basic research you are doing. जैसे जैसे हम आगे चलते रहते हैं, you are getting mature in your technology and making it ready that it will go to the market and it will act in the market. So this is all about technology readiness level. So we will first discuss TRL 1 to 9, and then I have few exercises that I will be giving to you where you will analyze your research idea. If you are doing some, like you have your own business, so you will analyze it whether this is at TRL 4 level or it is at TRL 6 level. You are working on some of your research projects in your intern project. Then what is the level of your technology? Is it ready to hit the market? Like मैंने जोर जोर में कह दिया कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूंगी. I am getting a very positive result. I will do my own startup. वो मैंने अपनी लैब में किया. But is it being functional at the ground? अगर मैं उसको मार्केट में बेचने जाऊं वो प्रोडक्ट को, will I be able to sell that product? मेरा TRL level उस लेवल तक पहुंचे या नहीं पहुंचा? So this gives you a reality check for your technology. So TRL level और कुछ नहीं है. This is the bank balance of your technology. कितनी वर्थ है आपकी टेक्नोलॉजी की, वो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल बताएगा. बिकॉज वी ऑल आर गोइंग टू वर्क नॉट जस्ट ऑन द सर्विस स्टार्टअप. आप कुछ टेक्नोलॉजी कुछ प्रोडक्ट पे काम करोगे, उसके लिए यू हैव टू इवेल्युएट व्हाट इज द रेडीनेस लेवल ऑफ योर टेक्नोलॉजी. अगर बहुत छोटे लेवल पे है, इट्स नॉट दैट यू विल से आई विल गो टू द मार्केट एंड स्टार्ट सेलिंग इट. You cannot do that because आपने सिर्फ उसको लैब में अभी तक टेस्ट किया. You are not tested in actual ground. So this is why TRL level knowledge is must for everyone who is going to work on the technology or a product related startup, right? So now first understand why we need to work on the technology aspect, why we talk about innovation, why we talk about technology, because creativity is something that brings the difference. अगर same काम हम replicate करके रहते रहे, so there is no innovation into that. You have to bring something new, you have to bring something that provides utility, and for that creativity is very important. And to give a check on your creativity on your technology particularly, we have TRL levels. So just to give you an idea, ये terminology शुरू कहाँ से हुई? So this terminology started way back in 1960s, जब बात होनी शुरू होगी कि there should be some standards that tell मेरी technology आपकी technology से better है या नहीं है. अगर better है तो कैसे better है? So this started with NASA. Everyone is aware what NASA is all about, right? इन वर्ल्ड की सबसे अच्छी R&D ऑर्गेनाइजेशन है. बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज गई हैं. दे हैव टेकन ह्यूमन रेस टू द स्पेस. दैट इज हाउ इट स्टार्टेड फ्रॉम नासा. So NASA brought this concept of technology readiness level. जो अपनी मिसाइल्स बना रहे थे, वो मिसाइल्स कितनी रेडी है to go to the space, they use this terminology called technology readiness level. So Genesis started way back in 1960s by NASA for their missiles and for their aeronautical work. And slowly it got adapted into defense. Slowly it got adapted by other countries. Like in 2010, we started using this terminology. What is the TRL level of your product? अब आप किसी भी funding के लिए apply करते हो, they ask you about what is your TRL level. हमने आपको fund किया at the start of your project, that was at TRL 1. So I expect, like after utilization of that fund and doing work for 2 years, you reach up to the TRL 4 level. So you have to climb the ladder of a TRL, because that is how you're increasing the maturity of your technology. You started with an idea को product बनने के लिए जो बीच की सारी चीजें हैं, that is being standardized by your technology readiness level. Very beautifully, BIRAC is one agency, if you all are aware, that's Biotechnology Industrial Research Association. So they have adopted TRL levels.
DRDO जो हमारे डिफेंस के है, they have adopted TRL levels. Then DST has adopted for number of projects. Whenever you are applying for projects, the TRL is one of the criteria that you are working on. So just to give you genesis how it all started, it started way back in 1960. जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, एक सेमिनार किया, हमने उसके ऊपर डिस्कस किया कि TRL 1 और 2, 3 में क्या होना चाहिए, 5, 6 में क्या होना चाहिए. Then I published those minutes. उस minutes को जो हमने publish किया, seminar notes कहते हैं. That seminar notes explain the technology so beautifully that an official document came out of it, which got approved from NASA. That termed for aeronauticals. They started with aeronautics that were known as TRL standards, and slowly it got adapted by various international standard organizations, and across the globe, this terminology of TRL level came into being. Just to give you a glimpse, what was the first TRL study that was carried out by NASA? So this is an original figure that is being provided by NASA that starts from TRL 1. बेसिक प्रिंसिपल आइडिया आया कि ये काम हो सकता है, दैट इज योर TRL 1. देन इट क्लाइम्स टू TRL 2. वो जो आइडिया था वो एक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में आप लेके आओगे, आप उसको पेपर में बना के देखोगे इज इट वर्थवाइल, हो भी सकता है या नहीं हो सकता, दैट इज TRL 2. TRL 3 में आप जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया आप उसको प्रैक्टिकली करना शुरू करते हो अपने लैब में. लाइक एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट इफ आई टॉक, मेरे पास आइडिया आया, देयर इज अ बैक्टीरिया दैट कैन डू वंडर इन टर्म्स ऑफ एनारोबिक डाइजेशन. ठीक है, नॉर्मल है कि वो वेस्ट को मेरा ब्रेक डाउन करेगा. दिस वाज जस्ट एन आइडिया एट TRL 1. व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू द कॉन्सेप्ट कि एनारोबिक डाइजेशन क्या होती है, हाउ बैक्टीरिया किल्स द वेस्ट प्रोडक्ट. I started reading about it. I started getting the concept. So that is TRL 2. Then I started experimenting it. मैंने कुछ बैक्टीरिया लिए, उनको वेस्ट के ऊपर डाला और फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि वो वेस्ट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. So that is my TRL 3 when I started working on those projects. Then TRL 4. मैंने जब वो प्रोजेक्ट किया, then I saw that example that actually my waste जो है वो पहले इतना था, now it has been shrunk and there is some digestion that my bacteria is doing on it. Then I started doing validation. मैं अपने गाइड के पास गई, मैं अपने टीचर के पास गई, मैंने उनको बोला कि चेक करो ये. And then they started checking कैसे किए, there various parameters कि कितना अब नाइट्रोजन रह गया, कितना कार्बन रह गया, कितना BOD है, COD. There are various parameters that help you to validate. जो मैंने आइडिया किया उसको मैंने बनाया, उसको मैंने क्या किया, वैलिडेट किया. देन यू मूव टू TRL 5, जबकि मैंने उसको एक्चुअल स्टैंडर्डाइजेशन की एक्चुअल में जब ये बाहर किसी इंडस्ट्री में हो रहा होगा, जो स्टैंडर्ड्स में हो रहा होगा, लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग विद दैट. दैट इज आपने उसको दिया एक्चुअल एनवायरनमेंट. जब ये तो मैंने लैब में किया, छोटे से अपने फ्लास्क के अंदर किया, मैंने एक्चुअली उसको बड़ा सा जैसे घर में हमारा एनारोबिक डाइजेस्टर्स होते हैं या कम्युनिटी लेवल पे होते हैं, मैंने वहां जाके इसको टेस्ट किया. दैट इज योर TRL 5. Then it comes your TRL 6 कि मैंने ये प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेट किया कि इस टेक्नोलॉजी को बाहर लेके जाते हैं. मैंने किसी इंडस्ट्री में गई या मैं किसी कम्युनिटी में गई, आई पुट अप माय टेक्नोलॉजी देयर एट अ ग्रैंड लेवल, एट अ बिग लेवल. जो मैंने फ्लास्क से शुरू किया, अब मैंने एक्चुअली एक एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर वो बैक्टीरिया डाल के शुरू किया. सो दैट इज योर TRL 6. देन कम्स योर TRL 7. TRL 7 पे मैंने उसको वैलिडेट किया, यस इट इज वर्किंग. इतना बड़ा अगर एनारोबिक डाइजेस्टर है, वहां पे मेरे अच्छे पैरामीटर्स आ रहे हैं एंड इट इज वर्किंग वेल इन दैट एक्चुअल एनवायरनमेंट. दैट इज योर TRL 7. देन कम्स योर TRL 8 कि मैंने उसको कमर्शियली वाइबल किया. कि कमर्शियली जब मैं लैब में काम कर रही थी वो तो एक्सपेरिमेंट था, पर एक्चुअल में जब मैं उसको ग्रैंड लेवल पे करूंगी तो इट विल वर्क और नॉट, इट विल नॉट वर्क. तो वो मेरा होता है TRL 8 कि एक्चुअली दिस इज अ बिजनेस मॉडल जिसमें मैंने इतना इनपुट डाला और मेरा इतना आउटपुट आया. एंड 9th में that it is proven that this is going to work and this is going to bring the positive benefits and positive impact and it is ready to be launched as a product. इसका बहुत fabulous example लाहौरी जीरा है. If anyone has studied about what Lahori Jeera is all about, it actually started the owner of the company and the PM. They were sitting, दोनों बहुत थके हुए थे, तो PM ने आइडिया दिया कुछ ऐसा फटाफट मिल जाए ना कि नींबू और मिर्च मसाला वाली कोई ड्रिंक हो तो अभी हम रिजुविनेट हो जाए. That was an idea that got clicked with the Lahori Jeera founder. And then he said कि ये जो बात कर रहा है घर में भी तो हम यही करते हैं, नींबू पानी बनाते हो, ऊपर आप काली मिर्च डालते हो, नमक डालते हो और आपका वो ड्रिंक बन जाता है.
तो ऐसी कोई ड्रिंक जो स्पॉन्टेनियसली हमेशा अवेलेबल हो. So that is an idea he got. Then he started mixing components. He started seeing कितना preserve होगा, कैसा होगा. So he climbed these things. एक एक करके he climbed it. He checked कि हाँ market में इसकी availability होगी. ये technology ready है या नहीं है. जो preservatives वो use कर रहे हैं. Will it work at the grand level? एक bottle की हम बात नहीं कर रहे, but millions of bottles अगर हम बनाएं. And actually when he was satisfied, it reached to TRL 9 and it hit the market. So this is how your TRL level gives you a kind of an understanding how ready you are to enter into the market. And as a potential entrepreneurs, as a potential startups, it is very essential for you to understand at what TRL level you are working. अगर आप इस लेवल पे वर्क कर रहे हो और मुझे बोलोगे कि मेरे को मार्केट में जाना है, मेरे को अभी आप किसी इन्वेस्टर के साथ मिला दो एंड आई विल लॉन्च माय प्रोडक्ट. So this would be foolishness of us because आपने ये सब कुछ तो check ही नहीं किया. When you have not checked all these things, how can you say that I will go and launch myself in product? If you will launch yourself, you will face the failure and you will return back to this particular thing. So why these TRL levels are very important? You have to understand what are the characteristics of each level, and accordingly you have to modulate or you have to upgrade yourself in each level. And when you are at TRL level, then only industry will come. It will pick your product. It will start selling that product. So the journey from TRL 1 to TRL 9 is very, very important. And the example, the first example was your nozzle point of your missile. That is how they identified, if you can see TRL 1 or 2 में streamline होना चाहिए, कितनी speed से जाना चाहिए, that was an idea that it started. And वो missile के form में, plane की form में कैसे आया, both के लिए they defined the technology readiness level. And this was the initial first example how your technology readiness level came into being. And you can see the journey. अब इन्होंने TRL 1 से लेके TRL 9 तक की journey is being shown in this particular image. So एक एक करके now let's study about TRL 1 to TRL 9. Please feel free wherever you want to stop me. You have some question, you have some query, and if you want to discuss कि आपका startup आपको लगता है इस वाले region में है या आपका project या idea जो है इसमें है, then we can stop and we can discuss about the level of TRL at that particular time. So now first start with TRL 1. So TRL 1 क्या है आपका basic idea. आपके पास basic idea है कि this can happen. All of you will relate to whatever work you are doing. हर कोई यहाँ पे कितने हैं जो स्टार्टअप बनाना चाहते हैं अपना? सभी है तो आइडिया सबके पास है. जैसे मैम आपका आइडिया है, आप मेरे को बताओ किस स्टेज पे आपका है आइडिया? At what time we should go for the documentation? When we have to, involve an industry also. So वो एक वैली ऑफ डेथ इज अ वेरी कॉमन टर्म दैट इज यूज्ड जो TRL 4 और 6 के बीच में होती है. दैट इज द टाइम जहां पे हमें अपने आप को प्रूव करना है जब हम शिफ्ट कर रहे हैं लैब से ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में. दैट इज बिटवीन TRL 3 टू TRL 6. So that is the right time to identify कि मेरा काम करेगा या नहीं करेगा. लैब में तो सब अच्छा हो रहा है, अगर आप एनवायरनमेंट में ले जाओगे नहीं होगा because there are number of parameters that come into the play. And TRL 3 to 6 to 7 is the right time where you should start involving industry because आपके पास वो risk aptitude रहता नहीं है तब तक आप research कर चुके हो तो वो risk नहीं ले सकते कि मैं करोड़ों रुपए इस पे लगाऊं कि वो चलेगा या नहीं चलेगा. That time you require an industry partner to come into that picture, and that time is also known as valley of death where maximum projects they die. That is why we call it as valley of death. This is a very common terminology you must all have heard कि आपने प्रोजेक्ट अपना लैब तक किया पर वो मार्केट में नहीं जा पाया क्योंकि उसके बीच में एक बहुत बड़ी वैली है. एंड दैट वैली इज ऑल अबाउट कि जब मैंने लैब से टेबल से मैं कोई चीज बाहर लेके गई हूँ, आप यहाँ पे मैं इस रूम में बेच सकती हूँ पर अगर आप मेरे को स्टेडियम में कह दोगे बेचने के लिए मैं नहीं बेच पाऊंगी. उसके बीच की जो वैली है वी हैव टू केटर टू दैट. उसमें मैं एक एक दो पार्टनर्स अपने साथ लेते आऊंगी कि लेट्स फर्स्ट अप्रोच 100 people, then let's approach 250 people, then approach 1000, then we'll approach 1 lakh people. So that value of death is very, very important. For example, if we are, writing the code, they ask for, 1 page. And that is, we are at TRL 3. अगर आपका प्रोटोटाइप रेडी आपने अपने लैब के अंदर वो चीज की हुई है then it is TRL 3. Yes, lab में हमें validate किया सब कुछ करते हैं.
और अब जब हमें अब इस स्टेज पे तो मैम हमें we need some market also and some person at their level to validate करेगा. Right. Validating. So is this the right time to plug in? Yes, absolutely. After your TRL 3, you have to plug them in because आपकी TRL 4 तो validation मांग रही है. जब आप किसी को बेचने जाओगे अपनी टेक्नोलॉजी, they will see who has validated it. तब आप बोलोगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेरा ये आया है. देन जैसे वाटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, जल शक्ति खुद हमें एक सर्टिफिकेट देती है. देन देयर आर वेरियस क्वालिटी एश्योरेंस इंस्टीट्यूट्स जो सेटअप हुए हैं. अगर मैं कोई हार्डवेयर मैंने बनाया तो आई हैव टू गेट इट सर्टिफाइड, आई हैव टू गेट ISO सर्टिफिकेशन. जैसे मैंने अगर फूड का कोई काम कर रही हूँ, देन आई हैव टू गेट FSSAI सर्टिफिकेशन. So that is the right time that you have to get all those things. The key point in that when we make them contract. Hmm. Like for example, I'm just a researcher. Hmm. But I'm involved. Few of my students are also involved. Hmm. And then now we are talking with the industry also and an institute which is validating that product. Correct. So some type of documentation. The number of documentations जो होती है, who's first of all you have to decide who's the owner of that particular technology. जो हम कहते हैं IP rights आपके बहुत important होते हैं तब. You have to discuss about all those IP rights. Like your students are working, उनको भी आप inventor में रखोगे. But who is going to own? Because you're working in university itself, then university will own it. Assignee आपकी university है. So documentation तो आपकी हर stage पे. Whenever you have started the project, that time you will start doing the documentation. जो आप records देखोगे उसके basis पे you will be able to get the information on that. Right, so now let's move. TRL1, everyone is clear? सब यहाँ पे startup शुरू करना चाहते हैं. हर एक के पास idea है, जिस idea पे आप लोग काम करना चाहते हो. To my online participants and to all of you, you all have an idea right now. You all are aspiring startups. जो भी हम अभी TRL level discuss कर रहे हैं, I will request each one of you to identify and to relate yourself to that particular TRL level. जब आपके पास आइडिया आया होगा, जो लोग अभी काम कर रहे हैं अपने स्टार्टअप में, उनके पास कभी आइडिया आया होगा वो TRL लेवल 1 पे कब थे, ये आप ट्राई करो एनालाइज करने के लिए. इफ यू जस्ट हैव एन आइडिया बट यू नो दैट आई वांट टू स्टार्ट माय ओन स्टार्टअप आउट ऑफ इट, you know at what TRL level you are. So try to relate the journey here itself in your mind. So now let's come to TRL1 is clear to everyone? It's idea, it's the concept that this is going to work and this can be a business proposition. That is your TRL1, first level of your readiness of technology. Then comes the second. What is second? Technology concept formulated. आपका जो आइडिया था आपने उसको पेपर में डाल लिया. अगर आप AI के बंदे हो तो आपने उसकी सारी AI मॉडलिंग थोड़ी बहुत ही करके देख ली, कोडिंग करके देख ली, एंड देन यू आर ट्राइंग कि ये चलेगा, ये कॉन्सेप्ट वर्क करेगा. इट इज नॉट इम्पॉसिबल, दिस विल वर्क. लाइक आपका जो प्रोजेक्ट है, आपने थोड़ी सी उसकी स्टडी पहले की, आपने पेपर्स के साथ कंपैरिजन किया, हाँ ऐसा कुछ काम करेगा, दिस विल वर्क आउट. So this is your TRL2, which gives you confidence that this is going to work. This is not just an idea. I have moved out of that idea. I have jotted the points. I know what the process is, how it is going to work. That confidence level will come at when you are at TRL2 level. When you decide what all things you are going to do. आप सारे components भी इकट्ठे कर लोगे उस time पे. जैसे मैंने शुरू करना है स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर, मैं सेंसर्स ले आऊंगी, मैं सैंपल ले आऊंगी, एंड आई विल स्टार्ट कोरिलेटिंग एवरीथिंग एंड स्टार्ट मेकिंग अ कॉन्सेप्ट आउट ऑफ इट. दैट इज योर TRL लेवल 2. नाउ लेट्स मूव टू TRL 3. ये सारा काम मैंने शुरू कर दिया अपने पर्टिकुलरली दिस. अगर मैं जैसे इंजीनियर हूँ और AI की हूँ, देन मैंने लैपटॉप पे अपने सारे मॉडल्स जो है वो वर्क किए, and I started validating it. Is this is going to give a result or not? Similarly, जिस भी project पे आप काम कर रहे हैं, anyone is like you all are free to give examples also. कि मुझे लग रहा है my project is at TRL 3 level. आपने जैसे मैम बोला all toxicology studies आ गई मेरे पास, मैंने सारे parameter study कर लिया. आपने lab level पे you have validated your technology is working, right? So that is your TRL level 3. Your readiness level of your technology is 3 when you have actually started working on it and getting some results. उस lab में आपके पास results आए हैं, you have done experiment out of that particular concept. That is your technology readiness level 3. Everyone clear about TRL 1, 2, 3, and the journey is very simple.
जितने हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो लास्ट सेमेस्टर होता है 6 मंथ्स की जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, दिस इज एक्चुअली वी डू। हमें पहले आइडिया आता है, आइडिया हमारे मेंटर, हमारे गाइड जो है वो उसको फर्निश करते हैं, देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। वो बताते हैं ये मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं एंड दिस इज द काइंड ऑफ एन एसओपी यू हैव टू फॉलो, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट कॉन्सेप्ट। एंड फाइनली जब तक हम थीसिस के अंदर जो रिजल्ट्स देते हैं वो कहाँ तक है, हमारे TRL 3 तक, राइट। TRL 3 कोई प्रोडक्ट तब हम नहीं बनाया था, तब हमने अपने रिजल्ट्स लेके आ गए थे। सो आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ तक रेडी थी, 3 लेवल तक टेक्नोलॉजी रेडी थी। अब इसको जैसे क्लाइंब करना है, देन एक्चुअली यू नीड पार्टनर्स इन द बिजनेस। जब आप बिजनेस की बात कर रहे हो, आप स्टार्टअप की बात कर रहे हो, आपने इसको बाहर लेके जाना है, तब लैब की कहानी विल एंड समवेयर एंड यू नीड एक्चुअल पीपल ऑन द ग्राउंड टू टेक योर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट। दैट इज योर टेक्नोलॉजी 4। TRL 4 क्या है, टेक्नोलॉजी वर्किंग इन लैब। आपकी टेक्नोलॉजी सिर्फ एक दो बार ही रिजल्ट्स नहीं दे रही, बट इट गिविंग अ मैग्निफिसेंट रिजल्ट एवरी टाइम यू आर डूइंग। जब हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं, ट्रिपल एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं, so that gives confirmation that yes, it will give same result every time. So that is your TRL 4. You have optimized the workflow of that particular technology you're working. Your prototype is ready. You are ready to hit the market. You're ready to pitch anybody. हम 4 से पहले ये भी नहीं कहते कि आप पिच करो, आप पिच भी मत करो। जब आप रेडी हो, आपने बार बार 100% कॉन्फिडेंट हो गए, दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क एंड आई हैव ऑप्टिमाइज्ड द एवरी स्टेप ऑफ माय प्रोसेस or of my technology, then you are at which level? You are at level TRL 4. TRL 4 कि मैं अगर इस पिक्चर में ना भी रहूं, मैं पेपर में ये सब कुछ लिख के जाऊंगी, still that technology would be working. That confidence comes at TRL 4. जो जब हम प्रोजेक्ट्स करते थे, that confidence won't be with us. एक दो बारी रिजल्ट्स आ गए, we were very happy, हाँ ठीक है पास हो गए, ठीक है। बट कभी हम ना हो वो कंडीशंस, अगर हम थोड़ी सी चेंज करें, that technology will work or not, that confidence will come on technology readiness level 4. Yes, you can pitch to the government stream right from TRL 1 also. There are number of schemes जो सिर्फ आपको आइडिया के लिए फंड देते हैं. Like we have recently launched a program called Ideathon. उसमें आपने सिर्फ आइडिया देने हैं. Give me some fabulous idea and I will give you money for that particular thing and then you work on idea. इसमें क्या होता है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ये आइडिया था, ये वर्क करेगा या नहीं करेगा वो तो अभी हमें पता लगना था, बट स्टिल हमने क्या किया, हमने रिस्क की इन्वेस्टमेंट की। 100 में से अगर एक आइडिया भी वर्क किया, दैट आइडिया वुड बी वर्किंग वेरी वेल इफ इट हिट्स इनटू द राइट टारगेट। सो देयर आर नंबर ऑफ स्कीम्स, आई वुड बी शेयरिंग दो स्कीम्स जो आपके TRL 1 से लेके 3 तक होती हैं। फिर कुछ स्कीम्स होती है जो 3 से लेके 5 तक होती हैं, एंड कुछ स्कीम्स है जो 6 से लेके 9 तक होती हैं। एंड हर एक का डिफरेंट पैटर्न होता है। पहले आप हमेशा ग्रांट लोगे क्योंकि आप खुद का पैसा लगाओगे नहीं। आप खुद का पैसा कब लगाओगे, जब 5-6 पे जाके यू विल गेट ए क्लैरिटी, यस दिस इज वर्किंग वेरी वेल, नाउ आई कैन आस्क माय मम्मा पापा ऑल्सो टू इन्वेस्ट इनटू माय स्टार्टअप, राइट। यू विल नॉट टेल देम कि मेरे आइडिया में इन्वेस्ट करो, आप हमेशा कुछ तो प्रूफ दोगे, प्रूफ के बाद दे विल द इन्वेस्टमेंट्स विल स्टार्ट कमिंग इनटू द पिक्चर, राइट। सो फॉर TRL 4 we all are okay. Now let's move to next, that is TRL 5. Now it is technology validated in relevant environment. अब आप कहाँ पे, लैब से बाहर निकल गए हो। Now you're not working on only one computer or working in my own particular lab. मैं एक्चुअल में अगर कोई मैं मिल्क टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हूँ, मैं एक्चुअली डेयरी इंडस्ट्री के अंदर जाके अपनी वैलिडेशन कर रही हूँ, जिसके लिए every country has their own specific quality assurance, quality control and various standardization and certification bodies. So they are called as your relevant environment. आप उन relevant environment के पास जाओगे और अपनी टेक्नोलॉजी को शो करोगे एंड वो आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। That is your TRL 5. अगर आपको सर्टिफाई कर दिया, जो FSSAI हर एक ने देखा होगा, सब फूड टेक्नोलॉजीज के पास होता है, वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं on which basis they certify it. So you have to clear those parameters, जो आपके पैरामीटर्स किससे मैच करते हैं कि एक्चुअल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा होगा। जब मैं माइक्रोब्स को लैब के अंदर ग्रो करती हूँ और जब मैं खुले पानी के अंदर छोड़ दूंगी, द पैरामीटर्स वुड बी वेरी वेरी डिफरेंट। तो आपको क्या चेक करना है, रेलेवेंट एनवायरनमेंट में हाउ योर टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बिहेव, दैट इज योर TRL 5, राइट। So then comes the
टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एंड रेलेवेंट एनवायरनमेंट, एक है वैलिडेशन, आपने टेस्ट करके उसको साइड पे रख दिया। अब हम 6 में क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दैट टेक्नोलॉजी, आई एम गोइंग टू डू द लाइव वर्किंग ऑफ दैट टेक्नोलॉजी इन दैट पर्टिकुलर रेलेवेंट एनवायरनमेंट। मैंने आपको डेयरी टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दिया, मैं एक्चुअली वेरका में जाऊंगी, वहां पे टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करूंगी और वो चलती रहेगी। दैट विल कीप मी शोइंग वो एक दिन पे टेक्नोलॉजी कैसे काम की, 5 दिन बाद कैसे की, 10 दिन बाद कैसे की। सो आई एम गोइंग टू make my technology working live. That is your technology demonstration in relevant environment. यहाँ पे जो key words है आपके 5 and 6 में, that is relevant environment. That is very important. अब हम अपने लैब से हट गए, अपनी बुक से हट गए, अपने जितनी थ्योरेटिकल नॉलेज थी वो सब से हट के हम एक्चुअली उस इंडस्ट्री और जहां पे भी आपकी एप्लीकेशन है, यू आर ऑन द ग्राउंड वर्किंग ऑन इट। देन कम्स योर TRL 7, जो आपने प्रोटोटाइप बनाया वो आपने ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, रेलेवेंट एनवायरनमेंट था कि वो रेलेवेंट, जैसे डेयरी का है तो मैं वेरका में जाके ट्राई किया। अब आ जाओ ऑपरेशनल एनवायरनमेंट जहां पे एक्चुअली आपका बिजनेस काम करेगा। सपोज हम डेयरी इंडस्ट्री की एग्जांपल देते हैं, अब आप किसी गौशाला में जाके वो वाला काम करोगे, दैट इज योर ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, जहां से एक्चुअल में आप दूध ले रहे हो, वहां पे आप अपनी टेक्नोलॉजी टेस्ट करोगे। सपोज योर टेक्नोलॉजी इज टू ट्रीट दी मेटास्टैसिस, जो काउज में बहुत कॉमनली होती है, जिसकी वजह से मिल्क गेट्स एडल्ट्रेटेड, राइट। तो आप अब कहाँ जाओगे, आप एक्चुअल ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में जाओगे, जब दूध निकल रहा है मैं वहीं पे जाके टेक्नोलॉजी चेक करूं whether this is going to protect my cow out of that particular thing or not. So that is your operational environment. तो आपके लिए कीवर्ड्स क्या आ गए, आप 4 तक कहाँ पे थे, लैब में, 5-6 में आप कहाँ पे आए, रेलेवेंट इन्वायरमेंट में, और इसके बाद आप कहाँ पे आए, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, जो एक्चुअल में ऑपरेटिंग ग्राउंड है। Between 6 and 7 is scalability. स्केलेबिलिटी, यस। आप ऑपरेशंस तभी करोगे जब आप उसको एक्चुअल ऑन ग्राउंड, जहां से आपने अपना बिजनेस शुरू करना है, सो दैट इज ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस। फिर आपका TRL 8 क्या है, आपने ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में यू हैव डन ऑल द रेगुलेशंस, यू हैव डन ऑल द सर्टिफिकेशन, यू हैव मैचिंग ऑल द स्टैंडर्ड्स, एवरीथिंग इज परफेक्ट, दैट इज योर TRL 8, जहां पे सब कुछ आपके सारे सर्टिफिकेशन हो गए, बार बार किया मैंने, ऑन ग्राउंड किया, एवरीथिंग इज मैचिंग, दैट इज माय TRL level 8, that I have achieved everything in my technology. Then comes your TRL 9, that is actual system proven in operational environment, and this is ready to hit the market. So that is your TRL level 9. So ये आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आइडिया से शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, एंड दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप आइडिया या कॉन्सेप्ट या POC को आप ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में डायरेक्टली नहीं करोगे, देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स। अब जो लोग मेडिकल फील्ड से हैं या जो लोग बायोटेक्नोलॉजी से हैं, दे कैन रिलेट दैट एक ड्रग को अप्रूव करवाने के लिए हमें अराउंड 20 साल लग जाते हैं, एंड व्हाई दैट 20 years process is there, because at every step there are so many regulation, आपको clinical trials कराने, आपको US FDA approval लेना है, and that is you're climbing each TRL level and you have to get so much of the approvals, regulation, certification, validation, that takes around 20 years of time. यही आप हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की बात करो, वो टाइम आपका स्पैन बहुत छोटा हो जाता है, 2-3 साल हो जाता है। अब जैसे आप AI की बात करो, वो स्पैन और छोटा हो गया है, with every passing day there's some new things that are coming into AI. So this is how your TRL level works. So I hope so everyone has clarity. आइडिया पे प्रोडक्ट TRL लेवल, और किसी स्टार्टअप में प्रोडक्ट हो ही ना, सर्विस में तो सब TRL लेवल। तो सर्विस भी आप टेस्ट करोगे ना ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। अभी हमें स्पेसिफिकली फोकस आपको एग्जांपल दे रही हूँ टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट से, बट अगर वो सर्विस लेवल पे है, यू विल टेस्ट योर सर्विस ऑल्सो। जब आपको ऐसे लगा यहाँ पे माई एप्लीकेशन इज वर्किंग वेल, अब 100 लोगों में वो एप्लीकेशन नहीं वर्क करेगी, वॉट एवर देयर इज सम डेटा कॉगुलेशन हो रही है, वॉट एवर डिफरेंट रीजन, तो उसमें भी सेम स्टेप्स वुड बी फॉलोड। बट हाउ TRL level got into birth कि आपकी जो टेक्नोलॉजीज है, तो सर्विस के साथ एज टेक्नोलॉजी इज नॉट लिंक्ड, बट ये स्पेसिफिकली हमारी टेक्नोलॉजी पे है। Ideas based on hiring people, like servants and all. So that तो आपका प्रोडक्ट है ना, उसके अंदर जो आप पोर्टल बनाओगे या एप्लीकेशन बनाओगे, दैट इज योर प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट पे आप पहले टेस्टिंग करोगे, जब मैंने 10 लोगों के साथ टेस्ट किया तो मेरा ये आया,
कितनी मैच मेकिंग हुई, how efficiently you were able to give the results. The first Hmm. start. So that will be TRL 5. TRL 4 और 5 जब आप रेलेवेंट एनवायरनमेंट टेस्ट कर रहे हो, आप सैंपल स्टडी हम करते हैं ना, मैं पहले पायलट करके देख रही हूँ ये एप्लीकेशन मेरे काम करेगी या नहीं करेगी. So that is between 4 and 5 you will start doing that. Right? सर्विस की काफी है, बट मेनली फोकस जो है वो आपका R&D या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. बट सर सर्विस की भी बहुत है, जो आपके IIMs वाले, जो आपके इंक्यूबेटर्स है, they provide that support and there are number of incubators and number of entities. जैसे आपका पहला लेक्चर हुआ होगा सोमवीर के साथ, if I'm not wrong, सोमवीर, I saw his picture. So उनका अपना इनोवेशन मिशन पंजाब है, that supports for the service as well. सर्विस और प्रोडक्ट, जैसे हम लोग प्रोडक्ट के लिए करते हैं, they also support for product and for services also. Then various incubators with IIMs that also support under this. And then जो आपके social ministries है, जो social line में है, they all support under service sector. Right? So ये आपकी actual में this is a kind of a collective story जो हमने अभी तक पढ़ा है. हमने एक एक करके पढ़ा है. अगर आप देखोगे collectively आपकी technology की journey, this is actually a journey of your technology. Any one of you has already set up a startup or already doing a business? Anyone from online side? Whosoever has their own startup or into the business line, they must have felt all those things. कि कभी ना कभी तो उन्होंने फील किया होगा. आप लोगों के पास अभी आइडिया, तो आप ये पहले वाले जोन में अभी घूम रहे हो. धीरे धीरे करके आइडिया आपका बन गया तो आप सेकंड जोन में खोलोगे. फिर जहां पे मैम आपने बात की, कुछ पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है नहीं काम कर रहा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, देन यू आर एट व्हाट, you are at value of death. You need an industry. आपको लगा था ये this is going to work very well, but आप जब इंडस्ट्री के पास गए वो कहते हैं no this is not going to work well because they are going to see number of things. वो कॉस्ट के साथ एनालिसिस करेंगे, इनपुट वर्सेस आउटपुट क्या है. सो उस टाइम पे आपकी वैल्यू ऑफ डेथ, जहां पे आपको इंडस्ट्री और जो पीपल जो ये काम कर रहे हैं उनका इनपुट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे तुमने सोचा कि मेरी ये सर्विस, ये एप्लीकेशन तो बहुत काम करेगी, बट जब एक्चुअल में मार्केट में कूदते हो आपको लगता है अरे ये एप्लीकेशन भी ऑलरेडी है, वो एप्लीकेशन भी ऑलरेडी है. देन यू हैव टू गेट अ काइंड ऑफ एन इनपुट फ्रॉम दोज इंडस्ट्रीज कि क्या मैं नया क्या लेके आ रहा हूँ उसके लिए. सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट come into clarity when you have the whole picture. So this gives you the entire picture of your particular business line. आप कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक लेके गया. You can do the evaluation on any idea that you have in mind or any startup. कोई भी startup के ऊपर भी हम discuss कर सकते हैं जो अभी unicorn बन गया है. Anyone, you guys name any one or two startup. We can see the story. आप उनके बारे में पढ़ो, उबर के बारे में पढ़ो. उबर कैसे शुरू हुआ था? That was the service platform, that is the service startup. How it started, what is the technology, what is the product. सारी टेक्नोलॉजीज वही है, कैसे जीपीएस से आप लिंक करते हो चीजों को and how you provide the service out of it. So हर एक का trajectory is same. So this is the universal standards जो हम follow करते हैं for any technology, for any product. Right, so this is the same thing. आपका साइंस से कमर्शलाइजेशन में प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर हम जाते हैं. सो दिस इज द इंटायर स्टोरी जो हमने अभी सारी डिस्कस की है वन बाय वन. एंड यहाँ पे अब हम फंडिंग की बात करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट यू नीड मनी टू रन अ बिजनेस. You cannot run a startup without talking about money. You can do research in your lab without getting worried about money. Still आपको research projects की grants चाहिए, आपको कोई ना कोई एंटिटी से चाहिए. पर अगर आपने स्टार्टअप रन करना है, आप पैसे को नहीं भूल सकते. आपको हर स्टेज पे पैसा लेके आना. और फंड्स की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पे होगी? When you are actually moving from an lab setup to an operational setup, that is the time you require maximum type of funding. और कहाँ से funding आनी चाहिए? आपकी इंडस्ट्री से आनी चाहिए. That should be the relevant in terms of operational environment. So this is the critical part in any technology जहाँ पे most of the technologies they die out. That is the zone that is called the value of death. And this is the time when you are working on your project, or working on your business line, working on your startup idea. ये 5 और 7 के बीच की जो कहानी है, this should be kept in your mind right at the beginning. This should not be missed at any level. If you're not able to cross this valley, you will die in that valley and won't be able to take that
as a startup or a business. Right. So then we have how it is related to our startup world. When you are going to enter into this particular field, you are going to pitch your ideas to relevant ministries, to relevant investors, and how your TRL level is going to play an impact. जैसे हमारे पास भी काफी डेक्स आती है, पिचेस आती है जो स्टार्टअप्स की, they do not talk about TRL level. So when they don't have clarity कि उनकी ready technology है या नहीं, that is a kind of an off point for all of us who are listening to them to give them a money. So when we ask them TRL level क्या है आपका, so they simply say TRL level 9 है, we are ready to launch in a market. But that is just an idea. आपने अपने garage के अंदर अभी उसको work किया, you cannot say that you are at TRL line. So उसके लिए एक जो confidence line है आपकी from TRL 1 to line, you have to be very very clear on that. And आपकी जो funding है वो भी उस side से आती है. Like for initial idea to POC के लिए you generally vouch for government grants. जैसे आपके पास 5 lakhs की grant है, 10 lakhs की grant है. जो agriculture में काम करना चाहते थे, is a very famous grant scheme called Raftar scheme. वो आपको 5 lakhs से 10 lakhs के लिए पैसा देते हैं कि आप इस वाले एरिया में वर्क करो. So this is at the level you should vouch for government grants. यहाँ पे आप कोई बाहर का इन्वेस्टर मत लेके आओ, आप कोई इंडस्ट्री को मत लेके आओ कि पैसा डालो. आप यहाँ पे ग्रांट्स पे फोकस करो, बिकॉज ग्रांट्स में आपकी लाइबिलिटी इज जीरो, दैट यू नीड नॉट टू गिव बैक टू द फंडिंग एजेंसी एंड यू कैन कंप्लीटली वर्क ऑन योर आइडिया. When your POC is ready, you are entering into the relevant environment. Yes, this is going to work. Then you start raising the seed funding. आपने फंडिंग के बारे में पढ़ लिया स्टार्टअप के लिए? अभी फंडिंग वाला नहीं आया? So when you will be able to relate, जब आपको पर्टिकुलर सेशन होएगा, एक स्टार्टअप जब शुरू होता है, what kind of a funding I need for running my business. It's not like that. हर कोई अमीन नहीं है कि अपना बिजनेस खुद रन कर सकता है. मेरे पास आइडिया है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, आई नीड नंबर ऑफ फंडिंग मैकेनिज्म. पहला जैसे हमने पढ़ा शुरू में, आई विल गेट द ग्रांट, देन आई विल गेट द सीड मनी. व्हाट इज सीड मनी? सीड जैसे हम सो करते हैं उसमें से प्लांट निकलता है. तो एक्चुअल में आपको वो वाला मनी चाहिए कि एक्चुअल में मेरी टेक्नोलॉजी पे कोई पैसा लगाया एंड दैट विल ग्रो. दैट इज योर सीड मनी. एंड मोस्टली ये भी ग्रांट की फॉर्म में होती है या डेप्ट की फॉर्म में होती है. वेरियस बैंक्स दे हैव स्टार्टेड गिविंग डेप्ट आल्सो एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट. जैसे एज एन इंक्यूबेटर वी आर ऑल्सो गिविंग डेप्ट. हम उनको जैसे 3% 5% पे लोन दे देते हैं, आप ये 3 साल बाद पैसा हमें रिटर्न कर देना. बट दैट इज अ क्रूशियल टाइम जो आपने 4 से 6 के बीच में उसको बना रहे हो. देन कम्स योर सीरीज ए. सीरीज ए जहां पे इन्वेस्टर्स कम इनटू पिच कि मैं आज आप पे 100 रुपए लगा रहा हूँ, कल आप मेरे को 300 रुपया दोगे. 3x 4x 5x रिटर्न. जहां पे हमारे जो इन्वेस्टर, जैसे आप सबने शार्क टैंक देखा है, दे टॉक अबाउट हाउ मच मनी आई विल गेट, हाउ मच इक्विटी आई विल गेट आउट ऑफ इट. दैट कम्स अंडर सीरीज ए. when they see this is actually working on operational environment and अगर मैं आप में पैसा लगाऊंगी then I will get my 100% return back. मैंने आज 100 रुपए लगाए, मेरे को 300-400 तो मिलेंगे ही मिलेंगे. जब आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, दिस ऑल स्टोरी इज रिटन कि आप मेरे को इतना इक्विटी दोगे, आपका 10 times ये राइज करेगा, then I will get this much of money back. That happens during series A and series B. And why at this time? Because आप एक्चुअल में अपनी टेक्नोलॉजी को प्रूव कर चुके हो, आप सब कुछ प्रूव कर चुके हो. यू आर 100% कॉन्फिडेंट दिस इज गोइंग टू हिट इन द मार्केट एंड यू आर गोइंग टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट. सो दैट इज व्हेन योर टेक्नोलॉजी इज कंप्लीटली रेडी. अब जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नाउ यू ऑल कैन एनालाइज इन योर माइंड कि जो सब कुछ आप अभी कर रहे हो वो कौन से TRL लेवल पे आता है. अभी 2 पे है, 5 पे है, 9 पे है. और अगर आप एज अ स्टार्टअप यू आर श्योर दैट यू आर एट TRL लेवल 9, तो यू आर नॉट गोइंग टू सिट ऑन द गवर्नमेंट ग्रांट्स. गवर्नमेंट ग्रांट्स काम नहीं करेंगी. 20-25 लाख से आपका काम नहीं होगा. यू नीड टू रेज फंड्स 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ एंड ब्रिंग योर प्रोडक्ट इन द मार्केट. सो दिस गिव्स यू अ क्लैरिटी दैट मेरे को कहाँ पे और किसको पिच करना है. बिकॉज फॉर अ स्टार्टअप टू बी अ सक्सेसफुल, the growth of your startup in terms of raising funds is also very important. जब आपका funding का session होगा, that's a very interesting session. You will come to know how money is very very important for startup. Technology is one part, but जब हम startup की बात करते हैं, everything that revolves around money. आप क्यों startup शुरू करना चाहते हो? One is that you want to create an impact. There is a social impact, but you want to earn money out of it. And that how you're going to earn money in the startup journey, that is also very important when you raise investments in this particular thing. Expertise, learn of equity.
No, generally seed funding as a form of a grant jati hai, but there are some entities that give in form of equity. Like when you join our incubator, you have to share a percentage of your equity with us. And in return, we are also giving you seed money. So every incubator, accelerator, entity, they have their set policies, but maximum of them work on the grant scale. When does angel investing take place? That starts with Series A. With seed also, some of the angel investors, they're like who are working on social impact side, like Social Alpha karke, there is one investment firm that invests a lot into our TRL 3 to TRL 6 because they're working on the social side. They're not working on that I have to earn money. But जो आपके investor venture partners आ जाते हैं, they are hungry for getting returns. And for them, I will take risk only when you will say you are ready in operational environment. अगर आपको पैसा कहीं लगाना है जैसे शेयर मार्केट में तभी लगाएंगे उन्हीं पे लगाओगे जो कि आपके दौड़ने वाले घोड़े हैं वहां पे. यू विल नॉट इन्वेस्ट इन सम रिस्की थिंग. तो रिस्की थिंग में angel investors आ जाते हैं because that is the name that they have got, that they have a social inclination. They are not towards the minting money out of it, but they want to create an impact. उसमें से अगर दो भी hit करेंगे then I am doing my purpose, that something very socially relevant has come into the market, right? So her level के साथ there is a funding stage that has been described, and there is described what are the key technology activities that are happening, and then what are the risks associated, right? So these are few of our investor POVs that we take in mind, and there are number of research grants जो आपको जब अगर आप TRL 1 और 2 पे हो तो आपको वो कौन सी स्कीम्स देखनी है जिसपे आप लिखोगे POC schemes. आप कुछ और नहीं लिखोगे, यू विल राइट POC स्कीम. जैसे DSIR, ये DST हैज नंबर ऑफ इट. निधि के अंदर देयर आर नंबर ऑफ स्कीम्स दैट फॉल अंडर दिस लेवल 1. और आपके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह पे आप इन्वेस्टर्स को पिच करो, आप इंक्यूबेटर्स को पिच करो, दैट इज अंडर योर लेवल 2, राइट? इसके बाद आई ऑल्सो शेयर फ्यू ऑफ प्रेजेंटेशन स्लाइड्स. वो मैंने इसमें नहीं डाली, वो मेरी फंडिंग वाले में है, जिसमें यू विल गेट एन आइडिया आप कहाँ से फंडिंग रेज कर सकते हो, विच ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर व्हिच आर गिविंग. सो देयर आर लिस्ट ऑफ स्कीम्स, यू ऑल कैन गो थ्रू दोस स्कीम्स. इसमें ना कहीं पे एक प्रेजेंटेशन का लिंक भी होगा. व्हेन आई वुड बी शेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन विल फाइंड दैट इज ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड स्कीम्स. यू विल गेट अबंडेंट इंफॉर्मेशन ऑन दैट. And this is again the TRL evolution कैसे होती है, what are the funds, what are the areas where we have to focus on. और फिर आपको साथ साथ पार्टनर्स की भी जरूरत होती है. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर इनटू अ स्टार्टअप बिजनेस यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन योर ओन. आप फाउंडर रहोगे, आप से मनी रेज करोगे, आपकी 100% से आप कहाँ तक आ जाओगे, 50, 40, 30 इतने पे, क्योंकि आप अपनी इक्विटी डाइल्यूट करते हो. व्हेन यू आर लुकिंग एट शार्क टैंक आप सोचते होगे, कई लोगों ने रिजेक्शन किया कि मैं अपनी इक्विटी नहीं देना चाहते, मतलब आई डोंट वांट टू गिव माय शेयर टू यू, that whenever my business will flourish, you will get 10% share out of it. So that is very, very critical. उसके लिए आपको जो partners है अपने, बहुत ही adequately you have to identify your partners. जब आप शुरू में काम कर रहे हो, आपके partners कौन होने चाहिए? Universities and academia, because आपको तब क्या चाहिए? You need a guidance, you need an expert advice, जो कि कहाँ से आएगा आपके पास? Research university से आएगा, academia से आएगा. फिर 4 और 6 में जब गए हो तो आपको कहाँ से आएगा? जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जो एक्चुअली उस एनवायरनमेंट में काम कर रही है, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हो गया, आपकी क्वालिटी वाली इंस्टीट्यूट होगी, वहां से यू विल गेट एन आइडिया. और TRL 5 के बाद आपने स्ट्रैटेजिकली किसके साथ पार्टनर करना है. अगर मैं जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज में करूँगा, आई वांट टू पार्टनर विद जियो इन दैट पर्टिकुलर थिंग. तो ऐसे से करके आप कंपनीज को आइडेंटिफाई करोगे हु कैन एक्चुअली टेक योर टेक्नोलॉजी. वो खरीद सकते हैं और आपको हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी दे सकते हैं, या आपके साथ कोलैबोरेट करके यू कैन बी पार्टनर एंड टेक अ लीड. बिकॉज व्हेन यू वर्किंग इन अ स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये बड़े बड़े नाम आपके साथ जुड़े होने चाहिए. आपकी कहानी जो आप एक स्टोरी टेलिंग के ऊपर भी आपका एक सेशन होगा, हुआ है अभी कि नहीं? स्टार्टअप में ना द स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो एन आर्ट. हाउ यू गोइंग टू सेल योरसेल्फ. अगर जैसे मेरे को लिफ्ट में कोई इन्वेस्टर मिल गया, मेरे को 1 मिनट में अपनी क्या कहानी बतानी है, मेरे को क्या इमोशनल टच बनाना है उसके साथ. सो दिस आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, जब आप सारे शार्क टैंक देखते हो, यू हैव सीन दैट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, हाउ दे start their pitch, how they give you an emotional angle into it, and then they come and ask you, हाँ अब ये हमारा प्रोडक्ट है, now you tell us कि आप कितना पैसा डालोगे. So you have to start with the problem, you have to give some emotional angle, and then you give the what is the solution I'm offering.
तो उस स्टार्टअप की जो स्टोरी होगी उस स्टोरी में बड़े बड़े नाम आएंगे। जैसे मैं बोलूंगी मैं आईआईएम के साथ एसोसिएटेड हूँ, मैं आईआईटी के साथ एसोसिएटेड, मैं आईआईसी के साथ एसोसिएटेड हूँ, मैं ये वाली इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड। अल्टीमेटली यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन, वाओ दिस इज बीन एसोसिएटेड। उसी तरह आपका स्टार्टअप है वो जियो के साथ है, वो और डिसॉल्ट के साथ है, वो ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। इट actually gives you an edge and gives you an kind of a respect in that terms. Yes, this startup ने अच्छी validation की है, अच्छी collaboration की है, that means इसमें दम तो है. So this is all. अब जैसे आप लोग startup जब शुरू करोगे, always keep in mind how you're going to choose your partners. Partners का role बहुत important होगा इसमें. शुरू में आपको क्या चाहिए? मेरे को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी रिसर्च इंस्टीट्यूट का टैग मिले कि I have done my core research here. Then आपकी वैलिडेशन अच्छी इंस्टीट्यूट से हुई है. देन थर्ड यू हैव टू टारगेट द कंपनीज, राइट? तो ये एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. But what TRL level can you start making? At team you can start a TRL 1 also. 4 लोगों ने मिलके आइडिया किया, जैसे आपका एप्पल कैसे शुरू हुआ था. 3 लोगों ने किया. इन्फोसिस में कितने को फाउंडर्स हैं, कितने लोग एक कमरे में बैठ के डिसाइड किया था. टीम फिर छोटी होती है, फिर बढ़ती है, छोटी होती है, बढ़ती है. बट टीम जो एक्चुअली ऑपरेशनल वाली टीम आप अगर बात करो कि जो रन करेगी ऑपरेशन, दैट विल व्हेन यू विल एंटर इनटू ऑपरेशनल एनवायरनमेंट. उससे पहले ना आपके पास इतने रिसोर्सेज है कि आप इतनी टीम को मैनेज कर पाओ, ना ही आपको करना चाहिए. दैट शुड बी योर 100% दैट इज गोइंग. जितने आप टीम लेके आओगे उतने आपको रिसोर्सेज भी स्पेंड करने पड़ेंगे. तो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में आके आपको एक्चुअल में अपनी ऑपरेशनल टीम बनानी चाहिए. बट जो आपकी फाउंडिंग टीम है दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम डे 1, फ्रॉम TRL 1. Right? So these are number of grants, number of projects that can be taken up, और कितना कितना पैसा उठाना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताया है. But keeping in mind time, I'll skip all of that because I have few exercise for you. अब हम, this is a slide I just wanted to give you an idea. जब हम TRL लेवल की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको ड्रग्स के केस में दिया जहाँ पे TRL आपके 20 साल तक चलते रहते हैं, ऐसे ही मैंने अगर आपको हार्डवेयर का एग्जांपल दिया 2-3 साल में हो जाता है, सॉफ्टवेयर का 1 साल में चेंज होता रहता है. तो हर एक सेक्टर की डिफरेंट डिफरेंट TRL लेवल की एक्सपेक्टेशंस होती है. एंड फॉर दैट व्हेन यू स्टार्ट योर ओन वर्क इन योर पर्टिकुलर एप्लीकेशन एरिया और सेक्टर, you should get alignment with that particular sector. So that was the motive I have kept this particular slide here. So ये कुछ government grants हैं जो which definitely all of you should look into it. DPIIT में जाके ही in fact you can get a list of funds that are available. Get that information. And TRL level के पता होने से what is an edge that you are going to get? You are going to understand the funding matrix. मेरे को कहाँ से फंड उठाना चाहिए. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड 1 और 3 के बीच में दीज आर फ्यू ऑफ दी वैलिडेशन ग्रांट्स मेरे को मिलती है. कंसेप्ट पे वर्क करो. देन देयर सर्टेन ग्रांट्स जो प्रोटोटाइप पे वर्क करो. देन देयर सर्टेन ग्रांट्स जो आपके बैंक देते हैं, जैसे नबार्ड आपको देता है. एंजल इन्वेस्टर के बारे में आपने बात किया. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काफी फंड आ रहे हैं, तो आपको किस स्टेज पे यू हैव टू पिक देम अप. सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स गिवन फॉर दैट and few of the partners that are being mapped. So ये मैंने agri-tech startup के point of view से, if you are going to start an agriculture related startup, so how you're going to do the mapping for the grants and partners. This is few of example. ये हमारा अपना startup है. उसने एक lab के idea से, actually not even a lab, उसका अपना घर था, उसने ये idea test किया, lab में लेके आया, हमने बोला yes it is working very well, and now actually that is a startup and doing a business. So this is actually happened. जो हम TRL की पूरी कहानी कर रहे हैं, some people have started from TRL 1 in front of eyes and reached to TRL 9 and minting kind of a good business out of the product. So similarly ये है, ये कौन से में एक्चुअल में ड्राइंग है उनकी. जब उन्होंने पेटेंट फाइल कर रहे थे, ये ड्राइंग बनाई थी उन्होंने जब प्रोविजनल पेटेंट फाइल किया. सिर्फ आइडिया था, फिर उन्होंने अपने लैब में इसको टेस्ट करना शुरू किया. सिमुलेशन वाली डायग्राम है. And then actually they built a tree out of it, which is actually getting number of orders from various bodies. So this is how your TRL journey starts. उसी तरह this is also our one of another startup. And जो भी लोग IP फाइल कर रहे हैं, पेटेंट वगैरह फाइल कर रहे हैं, ड्राइंग्स बनाते हो, उस ड्राइंग को रियलिटी में लाना is itself a very satisfactory experience.
ये जैसे मशीन लर्निंग आजकल ML के बिना कहानी अधूरी है because everywhere artificial intelligence is there. So how we are trying to evaluate the technology readiness level for machine learning, because emerging technologies में still we are not that handy in terms of what are the TRL level and what are the ethics associated. If you talk about artificial intelligence, some will say this is not ethical, how the results are coming up. But somebody says it's perfectly well, this is going to save my time, that has number of applications. So we are still struggling for emerging technologies in terms of how you standardize those technologies in terms of their readiness level. But this we have tried to do with machine learning and at what TRL level you can say that your particular machine learning model is ready to hit. Then this is for specific agriculture. हमने थोड़ी fields के हिसाब से बताने की कोशिश की है. जब आप idea शुरू करते हो, आपने lab में शुरू किया, धीरे धीरे आप एक छोटे farm में गए, फिर एक बड़े farm में गए, आपने साथ में Ministry of Agriculture को rope in किया, फिर आपने companies को rope up किया. You can see Samunity is the company, and then you are able to sell off your particular technology or product you're working on. So specifically एग्रीटेक का एक एग्जांपल लिया है हमने, एग्री सेंस, जो कि क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी बना रहा है आपकी सॉइल को डिजिटल टेक्नोलॉजी से आप हेल्प कर रहे हो कि कौन से न्यूट्रिएंट्स है, कौन से मिनरल्स हैं, एंड ट्राई टू इवैल्यूएट व्हाट आर TRL levels at each particular stage. You all can read, but I will definitely want all of you to evaluate your own idea, your own product, or any of your favorite startup. अब सबने यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करना है अपने लिए. आप लोगों ने कोई रखा होगा द काइंड ऑफ एन एस्पायरिंग मॉडल. सो वो एस्पायरिंग मॉडल की ब्रेक डाउन करो, रिवर्स इंजीनियरिंग करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन दे वर एट TRL 1 उन्होंने क्या किया, व्हेन दे वर एट TRL 3 क्या किया, उनके पार्टनर्स उस टाइम पे कौन से थे. कोई भी फेवरेट ले लो अपनी. अभी ज़ीरोधा इज बीन डूइंग वेरी वेल, जोमैटो इज डूइंग वेरी वेल. इन लोगों ने कैसे शुरू किया, व्हाट वर द TRL लेवल्स. यू कैन डू अ केस स्टडी एंड वो केस स्टडी को कोरिलेट करो TRL लेवल से. यू विल गेट एन मोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्चुअली दीस TRL लेवल्स आर. ये दिस इज वन ऑफ आवर ओन स्टार्टअप. उसने जब हमें पिच किया था, दिस वाज द स्टोरी दे हैव सीन. दे हैव raised 3 times funds from us. When they were earlier started, they were at TRL 2, then they reached at TRL 5, and then now they are at TRL 7. So this is a kind of a pitch that they have made us कि हमने क्या क्या किया. So I'm giving you a live example here. So this is how, what are the actual things उन्होंने डाली और हमने कहाँ कहाँ उनको support किया. So you can get an idea. पहले हमने उनको अपने यहाँ से grant दी, then हमने उनको KVKs होते हैं जो agriculture के लिए help करते हैं, farmers तक लेके जाते हैं, हमने उनके साथ उनको connect कराया. That was their relevant environment कि आप अपना टेस्ट करो. फिर जब उन्होंने एक्चुअल में वो अपना सेटिस्फाई कर दिया एंड इट वाज वर्किंग वेल, हमने नबार्ड के पास, नबार्ड एंड वी आर इन collaboration working, so we got investment from NABARD for our particular startup. So why I'm giving this story to you, because TRL levels becomes very important, how you rise in your startup business, and this is how they are working very well, and now they are been selling themselves as a smart soil technology. Right, so this we come to the almost last leg of our presentation. We still have around 30 minutes and you all must be tired also listening so much. So let's do some fun activity. Let's try to see कितना आपको समझ आया और कितना हम कर सकते हैं. And I want you all to see that whenever you are working on your startup idea, how, at what TRL level you are. So any one of you, the first one will fall under which category of TRL? Student measures soil pH manually in lab to see if AI prediction could work. अब उसने सॉइल का डेटा लिया, उस सॉइल के डेटा, जो कौन सा डेटा है, पीएच का डेटा है, वो पीएच का डेटा आया, उस पे उससे एआई प्रेडिक्शन चलेगी या नहीं चलेगी, मैंने लैब में बैठ के चेक करना है. सो दिस इज एट व्हाट TRL लेवल 3 में होगा. अभी तो वो डेटा इकट्ठा कर रहे TRL level हैं. 2 मैम, 2. हाँ, this would be somewhere 2 or 3, depends on your understanding. Yes. एक्सपेरिमेंट्स भी किया ना AI से create. हाँ, तो 2 or 3 depends on your understanding. जो कह रहे एक्सपेरिमेंट, बट आपका काम क्या है, एआई प्रेडिक्शन चलेगी या नहीं चलेगी. आपका स्टार्टअप क्या होने वाला है, एआई के ऊपर होने वाला है.
आपका डेटा के ऊपर नहीं होने वाला। अभी आपने AI प्रिडिक्शन कुड वर्क और नॉट, वो आपने चेक करना है अभी। सो दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग। अगर मेरा काम सिर्फ सॉइल तक है, देन इट इज अ TRL 3। अगर AI वाला है, देन इट इज अ TRL 2। Right. So now let's come to the next one. Prototype sensor working in 5 farm plots under supervision. No, 7 is your actual operational environment. ये क्या है? 5 man. This is relevant environment for you. Farm में करेगा ये नहीं. Here is 5 और 5 6 के बीच का है. Yes. So now let's get to the next one. Farmer using mobile app and paying subscription for soil alerts. 8 man. This is actually 9. आप already अपने sell कर चुके हो technology. You have already sell your technology and वो आपको पैसे भी दे रहा है इसमें. So paying subscription is one thing that you have already selling out your technology. That you can also do in 8. आप 8 और 9 में भी डाल सकते हो कि आप 8 में उसको actual में अभी demonstrate के भी पैसे ले रहे हो. और generally आप पैसे तभी लोगे जब आप successful हो गए हो. So now let's come to the fourth one, team design schematic for IoT based irrigation system. आप diagram तक हो अभी. तो कितने पे? 2 man. 1 and 2 के बीच में. 1 is idea, 2 is actually में हमने drawing concept बनाना शुरू कर दिया. पर अगर इसके साथ इन्होंने ये लिखा होता कि आप components भी ले आए हो, IoT के लिए sensors भी ले आए हो, तो definitely this was 2. पर otherwise आप TRL 1 और 2 के बीच में इसके साथ fight कर सकते हो, because 2 में आप चीजें भी इकट्ठी करना शुरू कर देते हो. Then come research paper shows relation between soil conductivity and nutrient content. 1 only. That is just an idea, and this is idea. Done है. So now अपने idea पे all of you want to bring your own startup. हर कोई अपना startup करना चाहता है. मुझे बस ये अपने अपनी notebooks पे you can write, and this is a kind of a self assessment that you have to do for your startup. Have you validated your idea in the lab? अगर जो भी शुरू है, सबने हाथ ऊपर किए थे. अब सबके पास आइडिया है जिसके ऊपर स्टार्टअप शुरू करना है, उसको वैलिडेट किया है या नहीं किया? से यस और नो. नो. तो फिर अभी करना पड़ेगा हमें, अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है. So yes, start doing this self assessment. This will be very helpful for you when you are in their journey. Have you built a working prototype? ठीक है. Has the prototype being tested outside the lab? This is where your TRL 5 is going to come into play. आप relevant environment में गए हो या नहीं? Has it been tested by real users? ये real users कहाँ पे आएंगे आपके? Operational environment में. Have you tested them? Yes or no आएगा आपके पास. This will give you, मैं कौन से TRL level पे हो. अगर हमें वैसे समझ नहीं आ रहा कि TRL level का क्या concept है, this is actually going to give you a image. Has it been certified or sold commercially? तो यस नो हो जाएंगे. और जब आप अपना ये मैप बनाओगे, जब आप अपने स्टार्टअप में अपना दिमाग लगाओगे, तब साथ में ये मैप के आप एविडेंस भी दोगे. वो एविडेंस क्यों दोगे? जब मैंने आपके ऊपर पैसा लगाना है, मैं वो एविडेंस भी तो देखूंगी. आपके सिर्फ यस और नो पे नहीं चलूंगी मैं. आपने तो मुझे बोल दिया हाँ आई हैव सेल्ड इट, तो आपने अगर उसको बेचा है तो मुझे वर्क ऑर्डर दिखाओगे, आप मेरे को दिखाओगे कमर्शियली आपने कितना गेन किया, आप अपनी बुक्स पे दिखाओगे दिस मच इज रेवेन्यू. दैट इज एन एविडेंस. अगर आपने टेस्ट रियल यूजर्स पे किया है तो आप मेरे को उसका डेटा दिखाओगे. सो एविडेंस को प्लग करना इस यस और नो के साथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपने फंड रेज करना है एज एन इन्वेस्टर, यू हैव टू पिच इट टू मी. आपको क्या लगता है जैसे जो शार्क टैंक पे उसी टाइम यस और नो हो जाता है? यार एक्चुअली डजंट वर्क लाइक दैट. Few of our startups who were at the Shark Tank end में आके they have cancelled the deals also, because एक तो है आपको वो वाली दुनिया दिखा रहे कि हाँ this is going to happen, but actually जब deals convert होती है takes a good substantial amount of time कि कितना आपका जाएगा, कितना मैं लूंगा, and then you have to map it with the evidence also. जब मैं अपना 1 रुपया भी आप कहीं पे लगाओगे, you need a kind of a proof from the other person, yes this will work or not. राइट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सेल्फ असेसमेंट. जब आपको ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, जब भी आप अपनी स्टार्टअप जर्नी में ग्रो करोगे, ट्राई टू फिल दिस मैप. दिस एक्सरसाइज वुड बी वेरी वेरी गुड. एक आपको एक बिजनेस कैनवस की भी प्रेजेंटेशन होगी, आई थिंक सो. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. हाउ यू मेक अ कैनवस ऑफ योर बिजनेस. दैट गिव्स यू एन आइडिया कौन मेरा कस्टमर होगा, कहाँ से मुझे मिलेगा, कौन मेरे कॉम्पिटिटर्स होंगे. इन दैट कैनवस इट गिव्स यू एक्चुअल स्टोरी ऑफ योर विल इट वर्क और नॉट. उसी तरह make a canvas for your TRL also if you are betting on the technology related kind of a startup growth.
because this is what edge you have. आप कुछ replicate नहीं कर रहे हो, आप कुछ नया लेके आ रहे हो market में, right? So this is another thing. वो mapping करने के बाद आपको ये करना है storyboard challenge. If I give you 5 or 10 minutes, will you be able to do this TRL storyboard challenge? आप लोग group में भी हो सकते हैं, जो हमारे online वाले हैं, they can do it individually, but here we can form 2 groups. I'll request if you can help me out in forming the groups. So we can have 2 groups, they can work on this particularly storyboard challenge. We will give only 5 or 7 minutes, that is I think so good enough. For our online participants, they can do it individually. Pick any one technology or any one solution oriented, whatever, it's up to you. आप कोई food का startup बनाना चाहते हो, आप कुछ ice cream related बनाना चाहते हो, आप कुछ technology related बनाना चाहते हो, leave up to you. ग्रुप डिसाइड करे मैं किस स्टार्टअप आइडिया पे काम करना चाहता हूँ और उसके मेरे को 9 बॉक्सेस बेस्ड ऑन TRL लेवल्स आपने बताने, जो भी आपकी फील्ड है उसके बेसिस पे यू कैन सिलेक्ट. हैव 5 मिनट्स वेरी क्विक, जस्ट one वर्ड विल वर्क फॉर ईच बॉक्स. आपको मेरे को TRL 1 से 9 तक बताना है. सो लेट्स हैव 2 ग्रुप्स. Yeah, first 2 rows and last 2 rows. Right. Make sense? Sure. So take 5 minutes. 5 minutes would be good enough. आप कोई भी आइडिया, कोई भी रैंडम आइडिया पे वर्क कर लो, जो भी आपके माइंड में है कि आपको स्टार्टअप शुरू करना है. 1, 2, 3 words are good enough. And for our online ones, if anyone wants to share, अगर उनके पास already idea है, they want to share, so feel free to pitch in. कोई भी, I mean this is just an example I have given because I am from agriculture field, मैं biotechnologist हूँ, so I have given this idea. But anything, आप जो, आप कोई एक consensus से pick कर लो और you pick up जो already market में चल रहा है, like you can pick Zomato के ऊपर आप करते हो, you can pick Uber, ये सारे तो हम use कर ही रहे हैं. कोई drone technology पे pick कर लो, आप कुछ भी pick कर लो.
Components. वो थोड़ा महंगा हो component. We have another 2 minutes. Auto improvement to the problem data being कोड में कन्वर्ट Sure, shall we start now? Just a minute, last. Anyone from online side they want to share? Yeah, ma'am. I can share, but we just written on a copy, and or maybe I can just verbally tell the audience. Sure, आप ऐसे ही बता दो. You can share your idea and then the TRL levels you have pointed. All right. So I'll be working on a agri drone concept. So that would be maybe the concept stage would be pitching a TRL 1 box.
Then the next TRL 2 would be the research on the agri drone issues or applicability on the real case. Then the TRL 3 would be the POC and the simulated design of the agri drone. TRL 4 would be the agri drone working model manufacturing. And Manufacturing 5 in-house or outside? in-house in the lab. Then TRL 5 would be the drone and general testing and flying. 6 would be the real use test flying on the test ground. तो 5 वाला कौन सा है आपका? 5 will be the drone general testing. Ground कौन सी है? 5 कहाँ पे उड़ा रहे हो? On the like the actually agri land. और 6th वाला actual farm में जाके. Yeah, exactly. All right. 7 would be the prototype development after the test data collection from the real use case flying. And 8 I'm pitching is like pitching the drone in the agri market. And mass production of drones would be the TRL 9. और आप ड्रोन फ्लाइंग का सर्टिफिकेट कब लोगे? आप उड़ा ही नहीं सकते ऐसे. आप फील्ड को भी आइडेंटिफाई कौन करके देगा? You're right. So DGCA approved drone or ISO certified like whatever certifying agencies are there in the market. हाँ, तो ये आप कौन से वाले बॉक्स में डालोगे? This would be in the 7. 6 and 7 के बीच में. Yeah. Right. Hello, great. Chalo, all the best for your idea. Now let's listen from our team. So team 1. So anyone of you? Yes, ma'am. It is regarding our idea is to manufacture a device to identify presence of germs or chemicals in agricultural products. So it is a TRL 1 idea. Then we made a drawing and device component which we required to develop this device. This is a TRL 2. And drawings and components which we require. Now we take and make our device and we started data validation in a lab. It is our TRL 3. And we are now working again and again with same results coming with this each and every experiment. So it is a TRL 4. And now we are taking it to the relevant field, to a farmer's field. We are showing a demonstration in the TRL 5. And now it is already we have demonstrated, and it is we are going to hand over to a few farmers for actual use. It is TRL 6. After that, Operational, you enter in 7. आप demonstration से बार-बार data इकट्ठा करके confidence ले लो. That is still TRL 6. Operational में जब आ रहे हो तो 7 में आ. Yes, ma'am. But 7 is only few 1 or 2 farmers. 8 is 6. In 7, we are increasing the level of farmers, number of farmers, and going back to the farmers, giving them, and we are taking now feedback also. Is there any requirement of improvement, or what are the results coming? Data, that is TRL 7. After that, we are going to the compliance, government checks, relevant bodies to give us certification and test we are as per their standards or not. तो ये टेस्टिंग तो आपको 5 और 6 में भी करवानी थी ना? जो डिवाइस की टेस्टिंग है, कितना पावर ले रहा है, ISO सर्टिफिकेशन है या नहीं, कुछ आपके डिवाइस के सर्टिफिकेशंस होते हैं, वैलिडेशन, वो आपको 5 और 6 में भी करवाना है एट द लैबोरेटरी लेवल. और ये आपकी इंडस्ट्रियल वैलिडेशन वाली होती है. तो 5 और 6 तो मेरा रेलेवेंट फील्ड है. अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल, वैलिडेशन इज द फर्स्ट पॉइंट. आपको पहले अपनी टेक्नोलॉजी को वैलिडेट कराने. वो कैसे करवाओगे वैलिडेट? आपको किसी QCI में जाओगे, कोई NABL सर्टिफाइड लैब में जाओगे, वहां से आप सर्टिफिकेट लोगे, फिर जाके फार्मर्स को दिखाओगे. और जब आप ये राइज कर रहे हो 7 तक पहुंच गए हो तो 6-7 फील्ड या फार्मर्स के साथ कहानी नहीं बनेगी. तब आप 100 वाले फार्मर्स के साथ बात करोगे.
क्योंकि जब आप 5 और 6 में किसी फार्म में वहीं पे 5-6 मिल गया आपको, अब आपने अपना नंबर भी रेस करना है व्हेन यू आर गोइंग टू 7, 8 एंड 9. चलो, ग्रेट वर्क. नाउ लेट्स कम टू टीम 2. तो हमारा आइडिया होगा कि हम एक सेंसर बिल्ड करेंगे एआई इंटीग्रेट के साथ, कि जो रिवर्स होती है उनके अंदर जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है किस लेवल का होता है, कि अगले 10 साल बाद हमें प्रिडिक्ट करके देगा कि 10 साल तक 20 साल तक उसके वाटर का कंटेमिनेट लेवल कितना है. ठीक है. और टीआरए लेवल पे तो 1 पे तो आइडिया हो गया. सेकंड पे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, पास रिसोर्सेज हैं, पेपर्स है, रिसर्च पेपर्स है, वहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे एआई के लिए. मेनली एआई सेंसर बिल्ड करना है. और TRL 3 पे हम AIT चिप्स, IoT चिप्स जो होती है वो लेंगे और LLM मॉडल बिल्ड करेंगे स्पेशली. तो सेकंड में लोग सेकंड पे तो प्रीवियस डेटा आएगा ना, जो प्रीवियस डेटा है, जो रिसर्च पेपर्स है. कहानी अधूरी है. जब तक आपने IoT चिप्स नहीं ली तो IoT चिप्स भी इकट्ठी कर लोगे आप सेकंड के अंदर ही. पता चले आपको IoT सेंसर जो है वो मिले ही ना, दे आर एट 1 लाख और 2 लाख, तो आपने जो AI का डेटा पे काम किया वो फिर आपको यूजलेस हो जाएगा. अब जितने कंपोनेंट्स का इकट्ठा करना है दैट यू विल डू एट TRL लेवल 2. TRL लेवल काम शुरू कर दिया उसके ऊपर. हमने IoT चिप्स और LLM मॉडल बिल्ड करना शुरू कर दिया. और IoT chips से you're getting the data. That will come at second, and third में you started utilizing that data for your AI modeling. और TRL 4 पे हम प्रोटोटाइप बिल्ड करेंगे. ठीक है. और नेक्स्ट TRL लेवल 5 पे तो वैलिडेट करेंगे अपने डेटा को इन्वायरमेंट में, मतलब एग्जीक्यूट करेंगे. और नेक्स्ट TRL लेवल 6 पे सर्टिफिकेशन होंगी अलग अलग. DIS और ISO, उसको नहीं पता क्या होता है बट मैम ने लिखा था, तो वो उनकी सर्टिफिकेशंस. और TRL 7 पे जो ऑपरेशनल इन्वायरमेंट है वहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे. और नेक्स्ट TRL 8 पे हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे. और TRL 9 पे कमर्शलाइज कर देंगे कि हमारा प्रोडक्ट ये है तो खरीद लो. चलो, परफेक्ट. तो अब टाइम हमारे पास कम है. वन वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज अगर हम लोग 5 मिनट में करते हैं, आई वुड वांट आवर टीम 1 टू बी द पिक्चर्स. आप लोग स्टार्टअप बना चुके, पूरी स्टार्टअप की टीम है. आप लोग हो जो फंड करने वाले हो इनको, और ये TRL 4 से 5 के बीच में आप पिच कर रहे हो. आप 4 से 6 के बीच में पिच कर रहे हो इन्वेस्टर्स को. So these are our investors. So these are very very important people जिनको आपको इम्प्रेस करना है. एंड आपको मैंने एलिवेटर पिच का टाइम दिया है जो कि 2 से 2.5 मिनट है. ठीक है. फर्स्ट फ्लोर से आप 9th फ्लोर पे जा रहे हो और इन्वेस्टर्स आपके साथ उस पे है. एंड यू हैव टू इम्प्रेस देम अ लॉट विद योर एलिवेशन कि आप TRL 4 से TRL 5 और 6 तक जा रहे हो एंड यू नीड मनी फ्रॉम देम, राइट. तो आपने क्या पॉइंट्स बोलने हैं, क्या क्या बोलना है, वो 2 मिनट में अपनी पिच तैयार करो, 1 मिनट में उनको डिलीवर करोगे. और आपने क्या क्या क्वेश्चंस पूछने, यू हैव टू ग्रिल देम बिकॉज योर मनी इज गोइंग टू गो. तो आप वो ग्रिलिंग पॉइंट्स में क्या लेके आओगे. जस्ट टेक 2 मिनट्स, फिर लेट्स हैव अ रोल प्ले एंड देन वी विल एंड आवर सेशन टुडे. अब आपने मेरे को खुद बताया 4 और 5 के बीच में आपने क्या करना है, यही पिच करना है आपने. आपको यही वाली टेक्नोलॉजी को आपको उनसे पैसे लेने हैं. आप 4 और 5 के बीच में प्ले कर रहे हो, मतलब आपका प्रोटोटाइप रेडी है, आप चले गए हो ग्राउंड में, आप टेस्ट कर चुके हो अपनी फील्ड को. एंड नाउ यू हैव टू प्ले. कीप इन माइंड यू हैव टू ब्रिंग एन इमोशनल एंगल ऑल्सो. पहली लाइन बहुत इमोशनल होनी चाहिए उनके लिए. जो सब्जियां आजकल हम खा रहे हैं, हमें क्या पता हमारा बच्चा सेफ है या नहीं है. एनीथिंग इमोशनल, ब्रिंग सम शेर, वॉट एवर. शेरो शायरी करो, इमोशन लेके आओ. आप ऑलरेडी जस्ट रिमेंबर यू हैव ऑलरेडी मेड द टेक्नोलॉजी और ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड. आप 4 और 5 के बीच में हो. एंड आर इन्वेस्टर्स, यू आर गोइंग टू ग्रिल देम वेरी हार्ड क्वेश्चंस. आपका पैसा लगने वाला है. व्हाट आर द हार्ड क्वेश्चंस यू विल आस्क देम. ऑलरेडी प्रोटोटाइप बना हुआ है, वो मार्केट में आ गया है रेलिवेंट एनवायरमेंट में. सिर्फ 1 मिनट है. 5 जो बहुत इंप्रेसिव चीजें बोलनी है आपने.
So अब लिफ्ट हमारी खुल चुकी है. So you have to catch hold of them. वो खुद नहीं काबू में आएंगे. उसमें से एक तो भाग रहा है, तो पकड़ो उनको जल्दी. So this is one real time scenario आपका कैसे होता है. Anyone. अब बीच में आपको वही आपस में टीम स्ट्रेंथ भी शो करनी है. आपको लगता है इसने ये पॉइंट मिस कर दिया, अब साथ ही वो वाला पॉइंट ले आओगे. दिस इज अ रोल प्ले वी आर डूइंग. वो लिफ्ट के 2 मिनट के अंदर आपने क्या क्या बोलना है. ठीक है, चलो गला फाड़ के करोगे, इसमें माइक की जरूरत. चलो, नाउ इन्वेस्टर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल स्टार्ट योर स्टोरी. I give mic because people are sitting online also. Ma'am, nowadays, what we are not knowing whether we are going to, sir, for our kids, they will have a eye disease. फूड या फ्रूट, हम सोच रहे हैं बहुत न्यूट्रिशन देंगे, हम इस सोच के साथ हम वो फूड को खा रहे हैं या फ्रूट को खरीद रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं वो कितना नुकसान करने वाला है. तो हम इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी कंट्री को भी होता है कि हमारा 1.5 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू लॉस हो जाता है. हम एक ऐसा डिवाइस ला रहे हैं जिसमें सेंसर लगे होंगे और पूरा डाटा हम सबके मोबाइल्स पे ही आ जाएगा, और वो डिवाइस जो है सेंसर के साथ में उस फूड में बता देगा कितना केमिकल है. किसी लैब में ले जाने की जरूरत नहीं है मुझे कि ये फ्रूट चेक करना है, मुझे एक सब्जी वाले से फ्रूट खरीदना है और मुझे वो लैब ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं चेक कर पाऊंगा कि इसके अंदर कितना केमिकल है. न्यूट्रिशन वैल्यू जो भी है, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल, वो सभी में एक A to लेकर Z तक वही है, और हम उसी को डेवलप करने जा रहे हैं. उसके अंदर ऐसे ऐसे सेंसर्स होंगे, उसके अंदर डाटा ऐसा होगा. मोबाइल ऐप बिल्ड. तो आजकल कोई ऐसा एक डिवाइस So we can start with a small device, and gradually we can develop a sensor which can be installed on our phones, like just beneath the camera or inside the camera only. So we can work. What detection? It can detect any kind of chemical, like these days apples have that wax or the color thing, or vegetables have those chemicals sprayed, pesticides sprayed on them. So that can. Chemicals, they can have heavy metals, they can have, sometimes some formulated products. What type of your sensor will detect like mostly the chemical side. It won't detect the dirt and all stuff because that is our job to wash the vegetables and fruits at home. So it will detect all like everything inside, the chemical thing only. So we can first we can sell the device with the ongoing market. Then gradually we can design a sensor which can be installed on our phone only, the hardware.
the sensor like just beneath the camera. How much I will? इसमें अगर हम कोई भी डिवाइस में अटैच करेंगे तो डिवाइस ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो पूरे वर्ल्ड की सारी कंपनीज के साथ हम पार्टनर कर सकते हैं, एप्पल, शाओमी, सैमसंग, ये हर मोबाइल में सेंसर अनपढ़ बंदा भी यूपीआई यूज कर रहा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, सब चीज वहां पे अपना यूपीआई कोड लेके बैठा हुआ है। तो उसमें ये जब की बात है और जब सबकी चीज तो आप मुझे यहाँ पर तो वैरायटी ऑफ फूड है एंड वैरायटी ऑफ फूड विल मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। तो वन यू कैन नॉट जनरलाइज वन सेंसर। देखिए अगर आप वहाँ पे तो एक के साथ आप सारे नहीं कर सकते, थोड़ा केमिकल में साथ में रिलेटेड होगा। केमिकल के भी हमारे पास 16 है, उसमें से भी वो एक या दो को डिटेक्ट कर पाएगा। थोड़ा साथी हेल्प ले लेंगे No, actually, we'll give you equity, and in return, we need some mentorship also. So we can take mentorship from the sir. We need some mentorship. मैं 5 किलो सेब लेता हूँ, हर सेब में तो मैं चिप लगा के फिर तो मैं उधर ही रह गया, फिर हर सेब में चिप लगाऊंगा, फिर डाटा आएगा, दूसरे सेब में लगाऊंगा, तो ये काम नहीं करेगा। We won't insert anything inside the fruit or a vegetable. We'll just touch the fruit to the device and it will detect. But वो same batch से होगा ना, so it is highly likely that if a single fruit has that, so it is highly likely that the whole batch has that, so you don't have to repeat the whole process for each and every fruit. Optimize करेंगे इसको, working. You've already done most of the optimization. We've analyzed the water activity of different fruits and हर fruit पे क्या like we can. And you have maybe So अब आपका लिस्ट का दरवाजा खुल गया है, मैं want to give the final answer. इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे? आपको इक्विटी दे रहे हैं, मेंटरशिप भी ले रहे हैं. There are 2-3 points they futuristic technology पे काम कर रहे हैं. अगर ये प्रोडक्ट अगर कुछ स्पेसिफाई कर देंगे, हाँ. so like for example अगर हम किसी प्रोटीन के लिए, क्योंकि हमारे प्रोटीन डेफिशिएंसी So this is a kind of a feedback you are getting from the conversation कि मेरे आगे जो consumer है या investor है वो क्या सुनना चाहता है मेरे से, तो आपको वही चीज सुनानी है उनको. आपने वहीं पे चलो, so deal is closed then. So this is just a glimpse कि what all conversations will happen, and उस time पे the investor जो कर रहा है, जो pitch कर रहा है, उसके लिए बहुत important है, they have to bring everything. और spontaneity में आपने ideas देने, जैसे आपने 3-4 companies के नाम दिए, आपने साथ ही knowledge दे दिया कि equity दोगे, साथ में mentorship भी देंगे, आप advisor भी बनोगे हमारे. So this is what spontaneity में you have to do. Then you give some optimization के experiment कि logically evidence based क्या होगा. So this is what an investing pitch should do. और आपको ज्यादा टेक्नोलॉजी रेडीनेस, आपने फोकस नहीं किया, 4 और 5 में ऑलरेडी आपने बोलना था मेरी टेक्नोलॉजी रेडी है, ये वर्क कर रही है, मेरे को ऑलरेडी सर्टिफिकेशन मिल गया है, तो मैम आप कैसे बोल सकते हो कि ये वर्क नहीं करेगी, बिकॉज यू गॉट वन ऑफ द कॉमेंट किया ये वर्क नहीं करेगा, पर आप तो ऑलरेडी 4 और 5 पे हो, आप तो ऑलरेडी यू हैव अचीव्ड अ यस फॉर at lab level at least you have achieved a yes. So that confidence in terms of मैं आपको reports दिखाता हूँ, papers दिखाता हूँ, all of us this we will be sharing that with you. So these are few things जो spontaneity is very quick जब आपके पास सिर्फ 2-3 मिनट है, and उन्होंने right on the point टेक्नोलॉजी पे भी आपको फोकस किया, पैसे की भी बात कर ली, और उन्होंने फोकस किया ग्लोबल से कैसे अलग है, इंडिया में डिजिटल लिटरेसी नहीं है इतनी, how we are going to address it, and then their work is to grill you to the core.
वो आपको रुला देंगे एक एक पैसे के लिए। तो उस चीज के लिए द पिक्चर्स जो है वो एकदम रेडी रहे। तो इट्स अ वेरी हार्ड अर्न थिंग दैट यू हैव टू गेट, एंड इससे भी ज्यादा टफ ग्रिलिंग होती है। दे वर वेरी स्माइलिंग एंड गिविंग यू ग्रिल क्वेश्चंस, बट इससे भी ज्यादा दे विल गो इनटू नंबर्स, दे विल कॉल यू अबाउट व्हाट इज द रिटर्न, आपका इनपुट पे कितना कॉस्ट होगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल आल्सो कम अप। So all the best. So this was a good exercise. You all got a glimpse. आप अपना business शुरू करोगे तो हर stage पे कैसे करना है. So this is the last slide for all of you. As a startup, you all should be doing this exercise whenever you start your own journey. All the best for that journey. जब भी वो journey शुरू करोगे, make canvas for yourself, make the map for yourself, and make it a kind of a good map that gives you a positive result. So with this, all the best to all of you, and wish you all. I see few of the startup founders here, and we wish to collaborate and do your startup business together. All right. Thanks. Very good guidance. This is an acknowledgement to entire team that is working with me for this particular thing, and you can follow us. I'm very active on LinkedIn. You all can follow me there. We can have chit chat there, and whatever support you require in future, I would be very happy to help you in that. आपने पूरी क्लास में एग्रीटेक टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की, तो उसमें तो सबसे बड़ी दिक्कत स्केलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, तो उसको ये कैसे हो? तो वही पहले जब मैं केवीकेस की बात की, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब आपने वो देखा होगा, जब मैंने पार्टनर मैप बनाया, आई केप्ट अ वेरी स्पेसिफिकली केवीके एफपीओ, बिकॉज वो मेरे को रियल सिनेरियो दे रहे हैं, दे आर द रेलिवेंट एनवायरनमेंट। और एग्रीकल्चर में और भी प्रॉब्लम है कि मेरा जो नॉर्थ में एग्रीकल्चर है वो एकदम डिफरेंट है साउथ में एग्री। यहाँ पे फ्लड इरिगेशन होती है, वहां पे ड्रिप इरिगेशन होती है। सो दीज आर द एरियाज। जैसे उन्होंने पिक किया कि आप सारे हैवी मेटल्स पे काम मत करो, आप सिर्फ 2 पे काम करो। So I have to create the niche market for myself, and then I will start doing the expanding. And that's what we are focusing on agri-tech also. हम सारा काम नहीं करेंगे, हम कोई एक particular problem, pain point उठाएंगे, and then we'll start working on it. And then your FPOs, and luckily एक ये disadvantage है, तो this is advantage also कि हम इतने diverse है, इतना data set है हमारे पास agriculture का, so we have number of things that we can do on it. So thank you everyone, and all the very best to all of you. Thank you, ma'am, so much. Yeah. Thank you everyone for joining. ये मिमिक